Hello guys, welcome everyone to join with us. So today, as you know, we are having a webinar on about during just a minute during your intermediate or just after the intermediate there what where we have to do for articleship or what we have to do in future. So I'll just give a brief description about our co-speakers, CA Lalit Malu, who's employee in Big Four and had done articleship in small size firm, and another is CA Pawan Mundra, who is partner in small size firm and running its own partnership firm, and he has done internship from Big Four. And third is Devesh Kabra, who is doing internship from a mid-sized firm in investment banking. So I would like to invite Devesh first to discuss about his topic, which is during intermediate, or if you have colleges also along with your intermediate, then how to manage and what you can do along with your CA intermediate and during CA, what other courses you can pursue. So I would like to invite Devesh first. Hi everyone. Am I audible? Yes, Yeah, you're you're audible. audible. Yeah, so hi, I'll just give a brief introduction about myself. Abhinav has already given it. But right now, even I'm a CA student. I'm currently in I've just completed my second year of articleship. I have my attempt due in November. And right now, I'm working in KNAB investment banking. And also, I did my CA along with a regular college. So I attended NM Nursing Manji College in Mumbai. So now I just want to speak about why should we do college with CA or why should we attend regular college. So just the first question that I'd like to ask everyone, how many of us do actually attend regular colleges? If anyone wants to raise their hand. Yeah, Yeah, so I'm just want to say why should we attend college? So right now, one of the biggest problems that I'm seeing, and I'm sure all the CA fraternity sees it well, is that right now we have a lot of knowledge with us. We are studying law, tax, accounts. I don't think you need more than this to start your own business or to have a successful practice. But still, why is it so that we are falling behind our competition from other people who are doing MBA in finance or who have just completed IIM, but we are competing for the same posts, and then CA isn't given preference? It's because I feel that we are not focused on our holistic development. So now, how do we achieve that? If you attend college, you get a healthy motivation from everyone that is around you. So I'll give my example. In my BCom batch, I had around 800 students with me. 400 of them were doing CA. So it helped me build a lot of connections. Right now, I know people who are doing internships from the very basic to from a very basic firm which just has a sole proprietor to working in your big fours. They've also helped me get my job. I'll tell you how I got a transfer. One of my friends left this department, and at that same time, I was looking for a transfer. He just told me, Devesh, you can join here because I'm leaving, and I'll give you a good recommendation. I've done the same to my other friends as well, as they wanted to join an audit in a small size firm where they'll get to learn about a lot of things. So that you get if you join a good college is that you will make great connections. Second is your healthy motivation. Since I had so many people around me doing so many things, they were just not doing BCom along with their CA inter or their CA final. They were also pursuing so many other courses. So it also kept me up to date and made me and motivated me to do and try some other things as well. It also helps in your CV building. So right now, if you want to pursue any other course outside of India, or if you want to pursue any course in which they don't just consider your marks, they take your interview as well before joining. And even in a lot of firms that you will join, they will give around 50 to 60% weightage to what you have done in your extracurricular activities. Your extracurricular activities can be anything, ranging from your college organizations, your Rotaract clubs, if you're part of any NGOs or something other. Because to be very honest, right now, a lot of people are in the same boat. Even if I talk about the results which were just announced recently, we had around 10 or 11% result. People who had passed in the first attempt. So what is it that makes you so different from them? Or why is it that the interviewer should select you in that criteria? So that can only be if you know how to speak well, if you know how to present yourself, because I'm assuming that knowledge everyone is at par because they have cleared their examinations.
Another thing it helps is because when you're in your articleship, sometimes it may happen that even if you're just in your first year, it has happened with me as well sometimes, that I don't know anything about the client call that is about to happen or a client meeting that is about to be happened. I'm just informed 30 minutes before. So I still have to prepare as to what I have to speak in front of the client. So at that time, I don't have to take a step back and rely on my managers to speak on anything. So it also gives them a good eye as to that. So they know that even if you are working alone, they don't need to be constantly with you, and then they can give you clients to manage on your own. So you wouldn't be dependent on everyone and anyone. So now a lot of you might be thinking that it's very difficult to do college with your CA and you just cannot go every day. So I know it's very difficult. Even my schedule when I used to attend college was I used to wake up at college at 6:45, then go directly from classes and reach back home at 10. So I used to leave my home at 6:15, reach back at 10 in the night. But still, I never felt that I'm very tired or I don't want to do this. Because let me tell you something, out of the 365 days that we have in a year, we only have to attend college for 50 or 60 days. That is around 2 months. And that is counting your exam time. If you don't believe me, I have the breakup in front of me. Around 80 days will go for your summer vacation. Around 40 days will be given for your exam preparation. Then you can count the 7 days as Ganpati, your 5 days as Diwali, 10 days as Christmas, your 52 Sundays. So in the end, if you count it down, you just have around 100 to 120 working days. And even if I count a 50% attendance or a 75% attendance, you just have to attend around 50 to 75 days of your college. If within 2 months you're getting a good brand name from your college, you are getting recognition from your recruiters, you're getting recognition from the other courses that you want to pursue, plus you're getting so many connections, you're getting to build your CV, then what is the harm in that? I'm just asking 2 months out of 12 months in a year. And what are the other courses that we can do to help build our CV and to expand our knowledge? So first is a very basic, you have to be a master of your Office suite, which is your Word, Excel, PowerPoint. It seems very easy that, okay, no, I have completed this in my ITT training, I have completed this in my college 9th and 10th standard examinations, I know. But still, if you go and see, even if you find some professional pitch decks of companies that are looking for fundraise right now, you'll see there is a vast difference in the kind of PPTs that we prepare and the kind of PPTs that is expected in a professional and a corporate environment. And you can, if you don't know any Excel shortcuts, you can be sitting there crunching numbers, importing files for hours and hours together. If you know how to do that, the same work can be done within 5 to 10 minutes. Another thing to help in your finance is you can take a valuation and a modeling class. So a lot of courses are available on YouTube as well. In YouTube by Aswath Damodaran, he has uploaded his entire series and he's called the God of Valuation and the God of Modern Financial Modeling. You can refer to his lectures as well. It's all available for free on YouTube. It wouldn't take more than 10 to 15 hours of your collective time. Then you can also go for online certification courses from your Udemy, your Prolera, or any other softwares which provide such good study material. Then another big and upcoming thing is data analytics. Even if you have a basic idea about data analytics, I think it will help you a lot in your audit, in your trend analysis as well. Then another common courses in which you will have to give exams are your CS, CMA, and your CFA. So all these courses right now are very hot in demand. You do that along with your CA. You also get a lot of exemptions if you are a CA inter or you've already cleared CA, or if you are appearing through the direct route. You get some exemptions in papers, and I'm sure you can find a lot of information about it on the web as well. Another thing is that if you want to go abroad or if you're sure that you want to pursue another degree, then you can also do MCom from a correspondence, but in a good university. So, Sir, sorry. sir, sorry to interrupt, but what about UPSC? So UPSC, I think you can do it, but that you will have to do it after CA. Because to be very honest, UPSC in itself is just like CA. It is very demanding. You will have to give in around 10 to 12 hours of study every day, and you will have to prepare for at least 1.5 years. So right now I'm only talking about courses which you can do along with your articleship till the time you've given your CA final exam. I'm sure there are a lot of other opportunities that you can do after CA as well. But I don't think it is practically possible that if you're giving in 10 to 12 hours daily, around 10 hours
Even if I count on a very conservative basis on our articleship daily, then you will be able to prepare for UPSC. But sir, if we prepare for UPSC after CA, then don't you think that it won't be it would be more problematic because we will lost all the touch with our commerce background and That's not the more case. into like UPSC then, and If it you would be say more difficult to switch. that is not the case. If you see a lot of even your Drishti IAS interviews that you see on YouTube, so many of them have completed their graduation from IIT or IIM. So if they can do the same thing, why can't we? And I think our age bracket is almost the same. Even we complete our CA at 21, 22, even they are completing it at the same time. So if they are not losing touch with their science background, I'm not sure about many CAs who have done, and like I don't know them or I haven't heard about them if they have done this, but I've seen a lot of IIT examples. So they can be in touch with their science side, so we can also be the same. Okay, sir, got it. Yeah. So and another course. So I was talking about MCOM, but I think you should do it from a very well-reputed university, like you talk about a Delhi University, Madras University, or Mumbai University, because frankly, MCOM has no value in India. Like MCOM is just equivalent to a BCom, and but you are just doing that so you can get your master's degree. And if you're planning to go abroad, then you can also say that you have already completed one professional course and one master's course in India, and you're going there for a double master's. In correspondence, you wouldn't have to do anything. You just have to give 8 exams a year. That is 4 papers in each semester, but you will get your brand name of Mumbai University or a DU. So I think that is it from my side. I just want to stress on the fact that I think we should focus on holistic development. I think in our pursuit of our studies, we are constantly surrounded by CAs only. We are surrounded by either our office colleagues or our friends that we meet at classes. We forget that there is an outside world as well, which is much larger than we can ever imagine. So we still need to stay competitive. We still need to be competent and qualified when we give our CA final exams. So we need to be a competent CA. For that, we need to do a lot of things. It can be as basic as brushing up your English, and it can be as basic as doing some all-round development and working in some extracurricular activities. So, are there any questions? No. Okay. I don't think I've explained it that well. It's either that or I've explained it too well. I hope it's the second case then. Thank you so much. Thank you, Devesh, for explaining very well. And also, you have told a hack to attend the regular college also, which some had already heard about. That you have to join college you have to go college just for 2 months. And another thing I would like to say that Devesh has became number one in his orientation batch, which is advanced MCS. So he also got first prize in that. And along with that, I think Pawan also might like to add one more course, which is actuarial science, which you also there are 16 papers, and I think Pawan would like to show some views on it. Over to you, Pawan. Pawan, you are on mute. Hello, Yes, we can am I hear audible you. to everyone? Yes, yes. Yes, go on. Abhinav, we'll come to actuarial courses afterwards. First, let's stick to our core topic of today's discussion. It's about articleship. So, being from a Big Four organization, I know a lot of culture over there, and I have done my all 3 years of internship from a reputed Big Four at Mumbai location. And post Big Four, I have also worked in a mid-sized firm in Mumbai, and afterwards, I'm working as a partner in a small-size firm in a tier 2 tier 3 city. So basically in past 6 years of my professional experience, I have got to know a lot about uh, pros and cons of your approach towards professional life. So I'll just give everyone a brief about Big Four, how the hiring process is there in Big Four, and what is the organizational structure basically. So, in all the Big Four organizations, there are basically two main departments, that is audit and taxation for articles.
and majority of the articles are hired in assurance based practice. And assurance also has two divisions like internal audit and statutory audit as per Companies Act. And in some of the big fours like E&Y and Deloitte, there is again a core specialization in stat audit also, like financial services, manufacturing segment, and telecommunication segment. There are three segments wherein, if you're hired in a particular big four for articleship, you'll be given only one segment in one. If you are hired for assurance services, then you will be working in one sector like manufacturing or financial services or telecommunication, marketing and technology. So all 3 years you would be in one particular sector. So many people are confused whether to join Big Four or not. So what are perks of being at Big Four is, you got to have a strong resume. Because it's a globally recognized organization, and the work approaches over there are a little bit more professional as compared to other firms in India. And second thing is, you get to groom your interpersonal skills, because at very young age you get to interact with CFOs and CEOs of companies, CEOs of private limited companies, or CFOs or assistant to CFOs of listed companies who have vast experience in the industry, and those are the masters of industry. So looking at the people, interacting with them on a day-to-day basis automatically grooms your personality, which helps you in long term. And third thing is, when it comes to development of skill set, like Devesh said, during your internship, you have to focus on developing your skill set like MS Excel or MS Word, MS PPT. So as compared to other firms in India, these skill sets are developed more in a professional way, and a very vast approach on all those Excel tools and techniques and usage of those formulas, application of those formula. So that these 2-3 things are basically more beneficial when you join Big Four. And many of the companies, while hiring a post qualification of CA examination, they look at your resume from where you have did your articleship. If you have done your articleship at Big Four, then your hiring percentage goes higher. So these are plus points of Big Fours, and there are many cons also. So everything has pros and cons. So what are cons is timing. There is no fixed timing in Big Four. Majorly in assurance services, there is no fixed routine. You have to go office at one particular time, but there is no fixed time of coming, because you are continuously chasing deadlines. Big Four organization, most of the clients are listed clients, and there is a quarterly compliance as per SEBI. So routine वैसा हो जाएगा कि you have to work almost in assurance practice, wherein I was in an internship. Almost I have worked in my 3 years of articleship 10 to 12 hours on an average. Abhinav and Lalit must be knowing, because they were my roommates in hostel. Yeah. So what happens is, after a particular point of time, you get panic for your CA final preparation, because if you're working for 10 to 12 hours, then ultimately your studies gets affected, your classes get affected. So that comes a problem after a particular point of time, and then students start switching from Big Four, and then they prefer for dummy articleship. Second thing is, you get to know a lot of people in Big Four, because it's a big organization. Like in our audit team, there were around 400 people at one location. So you get to build a strong network, and from people you get to learn a lot many things. And third, about the third thing is, there's this myth about specialization. Many people join Big Four for specialization, but I think specialization is not that. During your internship, it's more about knowing all the things. कोई भी आर्टिकल अगर 3 साल बिग फोर में गुजार ले, इसका मतलब वो नहीं कि he is a specialized person in that particular, like assurance service or taxation service. Real core specialization comes when you work in any organization post your CA qualification, because the kind of exposure and the complexity in exposure
is the responsibility. The more responsibility work is given to you post qualification, because those are all rigorous compliances of SEBI and Companies Act or India's everything. So that exposure, when an article, as an article, it's not given to you uh, many times, and it also depends upon your luck many times. Agar if you are plotted on a private limited client in a big four, then you get to know lot many things, because what is the work approach over there is, if there's, let's say, XYZ company, it's a balance sheet of XYZ company, so you get an area wise work. Like in 3 months you'll only work on cash and bank, and there are many articles who have been working 1 to 2 years of their articleship in particular area. So what happens is, after a particular point of time, they get bored, and they start hating audit. So that's the one of the loophole in big four, because you get only Sir, yes. sir, I have a doubt. Sir, you just said that audit makes people monotonous and make them get bored. But don't you think that if people do audit, then it will prepare them for practice also? Like if they want to pursue practice as a career after doing the articleship and after becoming CA, to will choosing So statutory so audit as a domain in Big Four would be great, would be beneficial, or just they have to do articleship in mediocre only. No, so see, my main point is, articleship, during your articleship, uh, don't go with that approach ki you have to do practice in future or you have to do job in future, because articleship is about knowing things better. Like, you just have to develop some important qualities. Like, first of all, it comes as discipline. You are given a work responsibility at very young age. This is the only course in India which gives you a lot of responsibility at young age of 20. So during articleship, it's not about learning those those technical things. अभी जैसा एक simple सा मैं example दे दूँ, तो there are many people who have done their articleship in VAT. GST regime आया था 2017 में, there was a GST. उसके पहले इंटर्नशिप जिस लोगों ने किया, उन लोगों ने बाद में पोस्ट सीए भी उन्होंने प्रैक्टिस किया ना जीएसटी में. सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन वैट एंड जीएसटी. तो इसका मतलब ये नहीं ना जिसने वैट में इंटर्नशिप किया वो जीएसटी में प्रैक्टिस नहीं कर सकता. So, there are people who have done articleship in tax, and post qualification they are doing practice in audit. And so practice में तो कैसा है ना, you have to keep all your doors open when you start practice. Wherever it's your location, it's a tier 2 city, tier 1 city, or tier 3 cities, you have to keep all your doors open. So it's main about learning your approach towards work. So that's my main point, ki don't just go for specialization, because that's a myth. People say कि आप है ना audit में specialized हो जाते हो if you join big four. Main thing is learning the discipline about work, and then approach towards how to get work done, meeting deadlines, chasing deadlines, dealing with your partners and everything. Those are qualities are important when you pursue your internship. So क्या हो गया ना आजकल, मतलब when people when students pass intermediate, they just go for मुझे तो पहले बिग फोर ही करना है. तो मुझे ये बोलना है कि जिन लोगों ने बिग फोर, जिसका बिग फोर में शॉर्टलिस्ट हो जाता है, जिसका नहीं होता है उसने घबराना नहीं कि मैं लाइफ में क्या कर पाऊंगा. बिकॉज ये जो 3 साल का इंटर्नशिप का पीरियड है, इट्स ऑल अबाउट grooming your personality and learning all the qualities, and these qualities can be learned at any firm in at any CA firm in India. That I can say by my guarantee. So ऐसा नहीं है कि बिग फोर में जाके ऑडिट सीख लिया तभी तो ही मैं प्रैक्टिस में ऑडिट कर पाऊंगा. That's a myth. It's just about learning how to get work done. What work to get done, that keeps on changing. आज इंडिया से कल जाके कुछ IFRS में और changes आएंगे. These changes yet to happen. अगर if you know, in last 6 months there have been around 138 amendments in indirect taxes. So this law is a changing one. So जो अपना प्रोफेशनल, अपना जो करियर है ना, जो अपना प्रोफेशन है, वहाँ पे एवरी डे देयर आर चेंजेस एंड देयर आर चैलेंजेस. अब जैसे देयर वाज अ मतलब रिटर्न फाइलिंग का प्रैक्टिस अगर देखोगे, इट्स ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड. लोगों ने मतलब इंटर्नशिप किया रिटर्न फाइलिंग में ताकि प्रैक्टिस में आगे जाके कर पाए. बट नाउअडेज टेक्नोलॉजीज
getting that thing done. So anything can happen. So main thing is you have to learn how to get work done, and basic qualities like discipline, how to network among people, be good at teamwork, and learn some professional etiquettes. These things are main when it comes to your articleship point of view. Thank you, sir. That was very insightful. And second thing you mentioned about UPSC, you I think asked to Devesh about Yes, sir. UPSC. I'd Yes. like to say, जो UPSC में if you know there are 9 subjects in mains examination. So जो main scoring subject होता है optional subject. If you look at the topics of optional subjects, there are 500 marks का जो optional subject आता है. That's a game changer for everyone because other subjects are common for every student. Optional subjects में engineers go for maths or physics or science, their background. जो humanity जो arts वाले student होते हैं, they go for humanity, and जो doctors होते हैं they go for their subjects. So 500 marks का जो UPSC का curriculum है ना, it's all about CA intermediate and CA final combined together. You will get a computation of salary question for 16 marks in UPSC examination, which you have solved at your intermediate level. If you see UPSC past examination. Yes, sir. I saw the past paper. Like we have just 8 subjects, and for each subject we are giving 100 marks paper. But in UPSC there are 16 questions, like 10 questions, out of which we have to do 6 or 7 questions, and each question comprises of the whole subject. So it is more squaring Whole for us. CA Yes, syllabus, yes, sir. whole CA syllabus, taxation, audit, and everything. So if you are thinking of UPSC, you can just start by some common subjects of UPSC, and then this will come after the main preparation of UPSC should start after your CA examination. Priority focus should be CA final and learn during your articleship. Zest for learning is must in articleship. Whatever level of work it is, maybe it of listed company, maybe it for a small trading firm. So that's my point of view at looking articleship, because I have done articleship from a big four, and now I'm working at a small size firm in a very small location. It's not non-metro city. So there's a lot of difference. Now, my friend Lalit has done his articleship from a small size firm in Mumbai, and now he's working in Big Four. So he has an experience of working in a small size firm and now working in Big Four. He shared his articleship view. Yeah, thank you, Pawan. Thank you. Very insightful. Hey, guys, I have done my articleship from a small size firm, and I landed my first job in the Big Four. So, what are my the learning experiences in my during the course of the articleship of 3 years, which gets to me in the Big Four? Actually, that question also comes in the mind that I am doing my small articleship from a small size firm. Will I get the job in Big Four or big MNCs in afterward after my qualifications? So that same questions has also come to my mind at the time of joining. But yeah, beside from I was having the offer from the big five, not from big four, during my articleship in the after the 6 months, but I chose to be in the small size firm. Why? So I'm telling you that from the in a small size firm I get to know the businesses, and the first thing is they get to know the businesses when I go on the audit, go on the audit. I talk with the owners, honor से बात करने को मिलता था. Then the whole process of the business I get to know from there, like कि क्या होता है, and from vouching to reporting, all I get to all I have to do in that in the articleship. And in the during my articleship, the first thing that in small size firm आपके articles होंगे जो थोड़े senior होंगे, like second year third year रहेंगे, और might be partner रहेगा या बीच में manager रहेगा. So ऐसा रहता था. तो जो आर्टिकल जो थर्ड ईयर आर्टिकल को होता नॉलेज होता था वो पास ऑन करता था फर्स्ट ईयर आर्टिकल को, तो उनके साथ जाके सीखने को मिलता था. फिर सेकंड ईयर में आपको खुद को पार्टनर को रिपोर्टिंग करना पड़ता था. सो वो बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहता था कि डायरेक्ट पार्टनर्स हमको सिखाता था, एंड वी गेट टू नो. एंड ईच ड्यूरिंग द like we did tax, we did audit, we did tax, we did GST, we did GST recos, and all during all VAT. We have done all the areas during the first year articleship.
during the starting of my articleship, I was not very clear that in which area I want to go or which area I want to pursue, like कि कौन सा एरिया करना चाहिए, क्या होगा. So ये स्मॉल साइज फॉर्म में मिलता था. और सेकंड चीज ये रहता था कि जैसे पवन ने सही बोला है कि यू शुड नॉट गो विद वेरी कि मुझे यही बनना है, मुझे लाइक प्रैक्टिस ही करनी है या जॉब ही करनी है. तो वही सेम केस था. तो ऐसे करके आर्टिकलशिप में और इन द आर्टिकलशिप पीरियड यू द डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था पार्टनर के साथ. सो पार्टनर इज ऑल्सो फ्रॉम द बिग फर्म. सो ही गेट अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ईजी रहता था कि लाइक कि इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट. पार्टनर खुद वॉच करता था कि आर्टिकल्स कितने बजे आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, व्हाट दे आर लर्निंग. द बेस्ट पार्ट इज दैट द पार्टनर खुद देखते थे कि व्हाट ही इज लर्निंग और तुमने क्या सिखाया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 6 months, 1 year. Then he is the best part of the learning. Yes, Pawan, you want to add something? जैसे there are some few inputs from my side during 3 years of your internship. What you should follow is, first, you should not take your graduation lightly. That's a mistake which I did, because there was some technical issue in my case. That's why there was a problem. If like अभी जैसे आज तुम्हारे पास प्री डिसाइडेड नहीं होगा कि इफ यू वांट टू गेट टू इनटू बी स्कूल्स और आपको मतलब बिजनेस मतलब एमबीए परस्यू करना है या आउट ऑफ इंडिया जाके एमबीए परस्यू करना है या कोई भी कोर्सेज एडिशनल कोर्सेज. सो यू नो बीकॉम हैज अ वेरी गुड वेटेज. सो अक्सर ऐसा देखा जाता है, मतलब इन माय हॉस्टल देयर आर ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ पीपल who used to take BCom very lightly and ended up getting less than 60% or 55% in BCom. So what happens is many of top B schools in India don't get you admission into their colleges if you have scored less than 55% in BCom. So don't take BCom lightly. Second thing, don't ever think of having a dummy articleship in third year or second year and third year. Many people मतलब ऐसा होता है कि अप्रोच कि हाँ मैं 1 साल 2 साल कर लूंगा, 2 साल में लर्निंग हो गया, अब थर्ड साल में तो वही चीज करनी है, तो थर्ड साल डमी कर लेता हूँ. I'll prepare for CA final examination. What statistics says, as far as my experience is concerned, in past 4 to 5 years, what I have seen is मतलब जिन लोगों ने डमी आर्टिकलशिप किया है ना, उन लोगों में से CA फाइनल पास परसेंटेज फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में is very low as compared to other students. Because ये सिंपल सी बात है, जब आपके पास you have a very limited time frame ना, you know the importance of time much more better. अब जैसे अगर अब आप घर पे आपके पेरेंट मतलब मम्मी को पूछ सकते हो, जब अगर कम टाइम होता है ना, कम टाइम में खाने का टेस्ट अच्छा बनता है कभी भी खाना बनाने के लिए. जब ज्यादा टाइम होता है ना, उस टाइम में इतना अच्छा टेस्ट नहीं बनता है जो कम टाइम में बनता है. तो वही एक स्मॉल प्रिंसिपल अपने यहाँ भी अप्लाई होता है. So वो एक चीज. Third thing, start your CA final preparation from a syllabus point of view, right from day one. If you don't start your classes, it's okay, but you can start reading direct tax के अब जैसे लोग बोलते हैं कि टैक्सेशन में अमेंडमेंट आता है तो हमने क्यों स्टडी करना चाहिए. अरे पूरा टैक्स तो चेंज नहीं हो जाएगा ना 3 साल में. There are lot many things which you can start from day one itself. जैसे ऑडिट है, ऑडिट पिछले 40 ईयर से जब से वो कोर्स बना है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आई थिंक जब से उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा. ऑडिट की अप्रोच में कहां से चेंज आएगा. So there are many topics in CA final that you can start from day one. You can on a self study basis also. अगर 1-2 घंटा भी बहुत हो गया, but you should start CA final examination from day one. और फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिकॉज क्लासेस का इतना लोड बर्डन नहीं होता है एंड ऑफिस से भी ज्यादा बर्डन नहीं होता है. बीइंग अ नेटिजन एंड अ न्यू पर्सन, ऑफिस वाले भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते. इन सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप you get lot many responsibility, whether you are in a big 4 firm or a non big 4 firm. Second year में you are expected lot because you have already spent 12 months in that organization. Sir, I have a question. सर आपने भी बोला था कि बीकॉम के अंदर हमें 55% से लेस होगा तो हम लोगों को कैट वगैरह के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा टॉप बी स्कूल्स के अंदर. बट सर ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है क्या कि अगर हमारे जैसे यूपीएससी के अंदर होता है कि हम लोगों ने अगर ग्रेजुएशन नहीं भी करी तब भी हमारी आईएएस की मतलब सीए की फाइनल डिग्री को वो एज अ मतलब ग्रेजुएशन कंसिडर करते हैं, तो ऐसा सर कैट में भी होता है क्या?
नहीं, कैट में कैसा है ना, मतलब हर एक जो कॉलेजेस है, जैसे IIM A B C, तीनों कॉलेजेस का है ना क्राइटेरिया अलग है टू इवैल्यूएट स्टूडेंट। अब जैसे IIM अहमदाबाद गिव्स मोर वेटेज टू CA, मतलब जो CA का स्कोर होता है, बट बीकॉम को भी इक्वली वेटेज। अगर मतलब आपका सर ग्रेजुएशन अगर नहीं आप होगा ना, व्हाट, मतलब अगर ग्रेजुएशन ही नहीं करा, अगर बंदे ने सिर्फ सीए ही कर रखा है, तो फिर उसे कंसिडर करेंगे क्या? हाँ कंसिडर करेंगे, बट दे विल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू अदर्स हु हैव डन ग्रेजुएशन एज वेल एज CA। दैट्स माय पॉइंट, बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन। अब जैसे IIM अहमदाबाद में देयर आर 400 सीट्स, एंड फॉर दैट 400 सीट्स 1500 पीपल को वो लोग सेलेक्ट करते हैं, और वो 1500 के अंदर ही आप शॉर्टलिस्ट से बाहर हो जाओगे। सो नो, एक सिंपल सी थिंग इंप्लाई करता है कि यू आर टेकिंग लिटिल थिंग्स इन लाइफ नॉट सीरियसली। अब जैसे बीकॉम इज अ वेरी लिटिल थिंग, बट अगर उसको सीरियसली लिया, इट हैज अ बिग इम्पैक्ट। सो वो एक आपका है ना ऑटोमेटिकली क्वालिटी दर्शा देता है उनके सामने, चाहे मतलब चाहते ना चाहते हुए भी वो चीज हो जाती है। ओके सर, ओके। हाँ, and third thing is preferably do not pursue articleship from a firm where partner or reporting manager is your relative। मतलब अगर रिलेशन में अगर आप आर्टिकलशिप करोगे ना, तो you'll have a very casual approach towards your work, and that's not the thing which is expected from you 3 years down the line post completion of articleship। So वो एक मुझे बोलना था। Third thing, fourth is, if possible pursue additional courses, like अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो then go for CS। थर्ड ईयर बीकॉम होते से you can register for LLB, cause अब जैसे लिटिगेशन है, लिटिगेशन इज द ओनली थिंग, वो कोई टेक्नोलॉजी लेके नहीं जा सकता है। मतलब जो प्रोफेशनल्स है, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लिटिगेशन वाला पार्ट फ्यूचर में 50 इयर्स डाउन द लाइन भी कोई टेक्नोलॉजी ले नहीं सकती है। जैसे रिटर्न फाइलिंग का प्रैक्टिस अगर मैं बोलूं, तो इट कैन वाइप अवे क्लियर टैक्स। ऐसे जो स्टार्टअप्स है वो लोग मतलब विद इन 2-3 इयर्स तो वो लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, ताकि ये जो रिटर्न जो कंप्यूटर ड्रिवन वर्क है, सब ऑटोमेशन वाला काम है, बट लिटिगेशन इज नॉट दैट थिंग। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन लॉ, उसके टेक्निकलिटी कॉम्प्लेक्सिटी में तुमको अच्छा लगता है, तो देन परस्यू CS, एंड CS you can do alongside with your CA final का internship और CA final का examination, and then post BCom register for LLB, and that will give you leverage as compared to your other peers in this profession। अब अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, देन CFA is very trending course these days। So you can clear CFA level 1 or level 2 alongside with your CA final examination। There are many, around 10-15 of my friends who have cleared CFA level 2 as well as CA final। Level 2 was cleared before CA final। So this can be done। और उन 15 लोगों में there are people who have done articleship from Big 4 and non-Big 4 also, and alongside with their CA final coaching also। So everything is possible। Only thing is you should have zest to learn, and do as much as more possible। Third thing is, आपको जो ICI के इवेंट्स होते हैं, या ये सब जो कल्चरल इवेंट्स हो गए, मतलब there are lot many events which is conducted, डिबेट कंपटीशन हो गया या लोकेशन कंपटीशन हो गया, टेक पार्टिसिपेशन इन दिस इवेंट्स जितना पॉसिबल है। जैसे स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, पेपर प्रेजेंटेशन होता है। ये थिंग क्या होगी ना कि दिस विल ग्रूम योर पर्सनालिटी एट वेरी यंग एज। अभी इसका इंपॉर्टेंस है ना आज नहीं समझ में आता है, जब 5 इयर्स डाउन द लाइन जब तुम पहुंचोगे, नहीं किया ना, जब फील होगा। रीजन एक सिंपल है कि जो यंग एज पे आपको सीखने मिलता है, और जो मतलब जो सीखने की पेस होती है ना, वो धीरे धीरे कम होती है एज बाय एज। तो आपके पास जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, नेवर मिस दैट अपॉर्चुनिटी। मे इट बी पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट कंपटीशन और पेपर प्रेजेंटेशन इन अ नेशनल कॉन्फ्रेंस, आवाज नहीं आ रही। अगेंस्ट आई ऑल थिंक तू ऑड्स बाहर यू घूम कैन रहा डू है, दैट। बैठ के बात एंड आई बेट मतलब आपका जो CA फर्म होगा, जो पार्टनर या मैनेजर होगा, दे विल ऑल सपोर्ट यू इन दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड और कोई क्वेश्चन है किसी से, मतलब एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? Abhinav, तुम कुछ throw some light? Just want to say that just during your articleship, just go with the time. Every day have a new opportunity. Every day comes with a new opportunity, will give a valuable lessons. So don't restrict yourself during your articleship days.
and that's the very important question at the time of your joining ki whether it's small size or big size, big fours. So जरूरी नहीं है कि big four, like I had also done my articleship from the small size firm. When I during my interview round with the partner, so the partner asked me the questions that what are your experiences during your articleship, so tell me about that. So when I tell him about the 4-5 बिजनेस का पूरा बताया कि बिजनेस कैसे रन होता है, एंड लाइक आई लर्न ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप की बिजनेस प्रोसेसेस कैसे रन होती है और किस किस बिजनेसेस मैंने देखे हैं. सो यू वांट टू मोर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस प्रोसेसेस एंड ऑल, and what I handled during my articleship, the experience, and I get the opportunity to work with the Big Four. भैया अभी एक इशू चल रहा है, जैसे एक इशू क्या यानी कहने का मतलब एक प्रॉब्लम है जो सब देखते हैं, जो आर्टिकल के लिए अपन जब अप्लाई करते हैं, अब जैसे पीक टाइम है तो पीक टाइम में रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक बिठा के वर्क करवाते हैं. अब इसके चक्कर में क्या जो प्रेशर इतना पड़ता है आर्टिकल्स के ऊपर, फिर वो जो ऐसे टाइम पर अगर किसी के एग्जाम्स हो तो फिर उसको हैंडल कैसे करेगा? नहीं, आई थिंक देखो एग्जाम्स के टाइम पे अगर आपका एग्जाम्स ही हो ना तो उस टाइम पे तो आपका जो बॉस वगैरह है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, दोज विल कोऑपरेट विद यू. जो अपने वर्किंग आवर्स के बारे में बताया कि प्रेशर हो जाता है आर्टिकल पे, छोटा सा दिमाग है, छोटी सी जान है. अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ दिस हैज हेल्प्ड मी. अब बीइंग इन अ बिग फोर, मतलब हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता था एवरी क्वार्टर. अब ऑलमोस्ट देयर वर 4 months in an year during my articleship wherein I used to work for more than 12 to 15 hours. तो अभी इससे मेरे क्या क्वालिटी ये हुई कि मतलब अब जैसे इंटर की पढ़ाई करते हैं ना हम लोग, 8 या 10 घंटे के ऊपर तो मतलब हार्डली कोई पढ़ता होगा इंटर में, राइट? वो तो हाँ, तो अपनी जो इनबिल्ट कैपेसिटी है ना कि भाई मतलब अपने आप को एक बेंचमार्क लेवल अपन सेट कर लेते हैं कि मतलब जब मैं सीए फाइनल के प्रिपरेशन को आया था ना, आई वाज हैविंग अ वेरी लिमिटेड टाइम, मेरे कुछ लेक्चर्स भी पेंडिंग थे. तो बस मैंने मेरा कैलकुलेशन लगाया, मैंने बोला इंटर में अपन 8 घंटे पढ़ा था, अभी 10 घंटे पढ़ेंगे. फिर मैं बोला यार शॉर्टफॉल हो रहा है ये तो. देन मैंने बस वो एक्सेल में 10 का 14 कर दिया, तो मेरे पास सरप्लस आ गया था. मैं बोला 14 आवर्स आई हैव वर्कड इन एन आर्टिकलशिप पीरियड, वो भी लैपटॉप के साथ. मतलब इट्स अ वेरी इरिटेटिंग थिंग, तुम स्क्रीन पे कंटिन्यूअस 14 आवर्स तुमने स्पेंड किया है. तो देयर वर मेनी डेज आई हैव स्पेंट मोर देन 14 आवर्स आल्सो. तो उससे वो क्या अपने आप एक क्वालिटी ये डेवलप हो गई कि भाई एक थर्ड पर्सन के लिए मेरा तो कुछ नहीं, आई वाज देयर ओनली फॉर लर्निंग. मतलब जो मैं काम कर रहा था उसका रेवेन्यू तो किसी और को मिल रहा था. थर्ड पर्सन के लिए मैंने प्लस मतलब 14-15 आवर्स स्पेंड किया है, तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता? सीए फाइनल तो मेरे लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है उस टाइम पे. व्हाई कांट आई स्पेंड दैट टाइम फॉर मी? चेयर और टेबल पे ही तो बैठना है, भले इफेक्टिव स्टडी ना हो, बट वो एक आदत हो जाती है ना. तो मुझे डे 1 से आदत थी सीए फाइनल की कि मैं 14 आवर्स बैठ सकता हूं. भैया जैसे अभी मैं आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ हर जगह, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वो इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपकी क्या क्वेरीज है. अब उनमें मैं उनको अगर पूछूं कि वर्किंग आवर ऑफिशियल कितना है और एक्स्ट्रा कितना बिठाते हो, तो वो यानी मैं उनसे कैसे उस चीज के लिए कैसे डील करें? क्योंकि कहने मतलब ये अगर स्टार्टिंग में ही सब बातें हो जाए तो बेनिफिट है. देखो स्टार्टिंग में अगर बात भी हो गई ना तो बाद में वो लोग पलट जाएंगे. या तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला, अभी जैसे बिग फोर में इंटरव्यू लेने वाला एक दूसरा पर्सन होगा और आप काम किसी और के साथ करोगे. मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था. तो वो नहीं है, बट आपको सिर्फ इतना बोलना है उनको कि मैं कितना भी काम करने रेडी हूँ, बट माय क्लासेस एंड माय सीए फाइनल स्टडीज दिस वोंट गेट अफेक्टेड, दिस यू हैव टू इंश्योर. अब जैसे मेरे ना फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप मुंबई में तो बहुत डिफिकल्ट होता है आर्टिकलशिप. 4 आवर्स तो ट्रैवलिंग में जाते हैं, 2 आवर्स एंड 2 आवर्स 2 and 2 आवर्स फ्रो, प्लस उसमें 12 आवर्स काम करना, तो जान ही नहीं बचती थी क्लासेस लेने के लिए. तो फिर आप वैसे टर्म्स है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेगोशिएट कर सकते हो उनसे कि भाई मैंने यहाँ पे एक्सेस काम किया है, तो मुझे सीए फाइनल के लीव्स थोड़ा एज कंपेयर टू अदर आर्टिकल्स यू कैन गिव मी अर्लियर लीव्स, और यू कैन गिव रिलैक्सेशन इन थर्ड ईयर. और जनरली बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड ईयर में काफी रिलैक्स रखते हैं आर्टिकल्स को. सैटरडे संडे कंपलसरी उनको हॉलीडे होता है, एंड दे सपोर्ट इन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. तो वो काउंट कर रखते हैं अपना कि अपन ने कितना एक्स्ट्रा वर्क किया. हाँ वो सब होता है वहाँ पे प्रॉपर, मतलब एक सिस्टम है बिग फोर में, उसको कॉम्प ऑफ्स बोलते हैं. आईसीआई का नॉर्म्स क्या है कि यू शुड वर्क 35 आवर्स अ वीक. तो अगर बिग फोर में कैसे है 35 आवर्स के ऊपर जो भी आपका एक्सीड होगा ना, तो पर 7 आवर्स आपको एक डे का कॉम्प ऑफ मिलेगा, और आप ऐसे 30 डेज यूटिलाइज कर सकते हो एंड में.
नहीं तो वैसे तो ऐसा 180 डेज का वो उनका लिमिट होता है, तो 180 डेज से एक्स्ट्रा 30 डेज बोल रहे हो आप? नहीं 180 डेज से एक्स्ट्रा नहीं, यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि 30 डेज आपके पास है ना एंड में आ गया, जब आपको स्टडी लीव पे जाना है ना उसके 2 महीने पहले आपके पास 30 डेज का कॉम्प ऑफ है, और उसके पहले का आप यू कैन यूटिलाइज, ऐसा मतलब लास्ट ईयर के आर्टिकलशिप में अगर सपोज अब जैसे सेकेंड ईयर आर्टिकलशिप के एंड में मेरे पास 60 कॉम्प ऑफ थे, तो मैंने मेरे मैनेजर से वही नेगोशिएट किया कि भाई मेरे पास अभी 60 है, आने वाले 4 महीने में मैं 30 यूज करूंगा, बाकी के 30 में एंड में यूज करूंगा वैसा। तो यानी 6 मंथ्स, जैसे मेरे को 6 मंथ्स मिलते हैं उसके अलावा 30 डेज और 30 डेज ऐसा? हाँ यस 30 डेज, और बाकी के 30 डेज आपको है ना मतलब एडजस्ट करना है कि 2 दिन ऐसे करके बीच बीच में आपको हॉलिडेज देनी है, एंड यू हैव टू नो गेट योर प्रिपरेशन डन और कोचिंग क्लासेस डन। तो ये आजकल तो सब ये बीच में बात होती है, ये इनसे स्टार्टिंग में जैसे इन माय फर्म दिस इज अ सिस्टम में ही ऐसा होता है आर्टिकल्स के साथ, मतलब उनका सिस्टम में ही टोटल कैलकुलेट होता है और टोटल दिखाता है कि आपके पास कितनी लीव्स है और कितना ऑफ है और सब कुछ है। तो आपकी तो स्मॉल साइज की? नो डेलोइट की बात कर रहा है अभी, डेलोइट में ना अभी की बात कर रहा है आर्टिकल। तो Anyways, मैं there is आर्टिकल हैंडबुक जो कि बिग फोर्स में होता है, आर्टिकल हैंडबुक होता है, उसमें पूरा आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती है। हालांकि अभी ड्यू टू GMCS एंड एडवांस ITT क्योंकि उसके भी लीव्स होते हैं, तो वो 150 डेज वाला क्राइटेरिया इधर मैच नहीं होता है आजकल। 4 मंथ समथिंग कुछ लीव देते हैं, और कितना 4 मंथ्स समथिंग कुछ देते हैं लीव, बिकॉज 1 महीना तो अलग से आपका एडवांस ITT और GMCS का लीव हो जाता है। तो भैया वो उनका जो भी नया सिस्टम आ रहा है वो जैसे आर्टिकल वाले को पीरियड को कम कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर तो इतना 4 मंथ्स भी नहीं रखेंगे शायद। अभी आए हैं तब देखते हैं ना। दिस इज तो और ऑल अभी तो डिपेंड्स अपॉन योर हॉलीडेज और टोटल ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मैनेजर और टीम। आपको अभी तो ऐसा नहीं कि सिस्टम में अगर 150 है तो आपको 150 ही मिलेगा। आपने अगर ज्यादा काम किया है आप कंपॉफ्स भी आप ले सकते हो, आप उनसे टर्म्स नेगोशिएट कर सकते हो, जैसे पवन ने बोला तो कि आपके ये सब टर्म्स कैसा होता है ना, ये सब कैसा है ना कि आपको 2 साल में ट्यूनिंग अच्छी रखनी है मैनेजर के साथ। हाँ हाँ तो वो आपके और मैनेजर के रिलेशनशिप के ऊपर है, बाकी उसमें और कोई दूसरा ये नहीं है। तो बहुत जगह पे ऐसा भी है कि 30 कॉम्पोस होते हुए भी तुमको देगा नहीं अगर तुमने उसके साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं रखी तो, बिकॉज ही इज योर बॉस एंड बॉस कैन डू एनीथिंग। तो मिड फर्म्स में ये हो जाएगा, मिड फर्म्स में अगर मैं सोचूं मिड फॉर्म्स में भी हो जाएगा। एंड तो कभी कभी है ना थोड़ा सा स्मार्ट प्लानिंग करना होता है। लेट्स से अगर गणपति फेस्टिवल आ रहा है, मतलब हॉलीडेज को प्लान करो अपने कि फ्राइडे को सपोज एक पब्लिक हॉलीडे आ गया, तो सैटरडे आप छुट्टी मार लो ऑफिस में, 3 दिन आपको कंटिन्यूअस ब्लॉक मिल गया, 3 दिन में यू कैन कंप्लीट 20% ऑफ कोचिंग क्लासेस ऑफ वन सब्जेक्ट, ऐसा करके यू कैन प्लान। और ये सब 3rd ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में करना। पहले 2 साल तक में क्या होता है ना रोहित, मोस्टली तो ऐसा रहता है कि तेरे को छुट्टियां जितनी चाहिए उतनी दे देंगे, बट योर आर्टिकलशिप आल्सो गेट एक्सटेंडेड विद योर लीव्स। मतलब अगर आपने ज्यादा छुट्टियां ली, आपकी 160 छुट्टियां बन रही थी और आपने 190 मांग ली तो दे देंगे, बट वो जो 40 का बैलेंस है या 30 का बैलेंस है वो आपको बाद में जाके सर्व करना पड़ेगा। अगर वो ट्यूनिंग अच्छी होगी तो वो देख लेंगे। हाँ वो ट्यूनिंग अच्छी होगी तो वो तो देख लेंगे। और मैं कह रहा हूँ ना 180 डेज आर मोर देन इनफ फॉर सीए फाइनल प्रिपरेशन। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है सीए फाइनल, और 3 साल बिग 4 में मैं दूसरी डिग्रीज के लिए जाऊंगा तो उसके हिसाब से सीए फाइनल तो रहेगा ही एक। लेकिन मैं मिड फर्म्स इस चक्कर में देख रहा हूँ कि मिड फर्म्स में क्या बोलते हैं कम रहता है इन चीजों का प्रेशर कम। अब जैसे सीएफए लेवल 1 अगर सपोज आपको अपीयर करना हो तो उसके लिए 20 डेज का लीव्स इज मोर देन इनफ, 15-20 डेज इज मोर देन इनफ। एक बार एसएफएम का आपने सब्जेक्ट का कोचिंग कंप्लीट कर लिया, एक रीडिंग हो गई आपकी, उसके बाद आप लेवल 1 15 डेज में क्लियर कर देते हो। मैंने देखा है हॉस्टल में 90% ऑफ स्टूडेंट्स ने वैसे ही क्लियर किया मेरे सामने। यानी मेरे को सीएफए लेवल 1 के लिए कौन सी क्लासेस लेने की जरूरत है सीए फाइनल की? एसएफएम और एसएफएम, ओनली एसएफएम। फर्स्ट यू कंप्लीट एसएफएम का कोचिंग क्लासेस एंड देन अपीयर फॉर सीएफए। ओके ये काम। हाँ एसएफएम लेना अभी स्टार्ट कर दो, आर्टिकलशिप में डे 1 से स्टार्ट कर दो। कॉस्ट क्या है ना, वेस्ट तो होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आप भूल जाओगे, बट वो सब रिकलेक्ट हो जाता है। लोग बोलते हैं इतने जल्दी कोचिंग क्लास लेंगे तो बाद में भूल जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड में रहता है अपने। हाँ रहता है सबकॉन्शियस। और क्या है, मतलब भूलना रहा तो वो 6 महीने में के अंदर भी भूल सकता है। 6 महीने में बोलो या 3 साल में बोलो, एक ही बात है ना। वो सबकॉन्शियस माइंड में जितना है उससे। अब ये एक सिस्टम, एक चीज मैंने भी सुना है समझा है, जैसे अब मैं 3rd ईयर होने वाला हूँ, तब 3rd ईयर भी होने वाला हूँ, तो मेरा सीए इंटर का भी यानी आर्टिकलशिप के 3 साल बाकी है, यानी अब 3 साल। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एमबीए इसके अंदर कैट का भी फाइट करूँ,
करना हाँ चाहिए? कैट का यू कैन डू ऐसा एक एग्जांपल है मेरे सामने, मतलब हमारे हॉस्टल में एक फ्रेंड का फ्रेंड था, ही हैज नॉट अपीयर्ड फॉर सीए फाइनल। अहमदाबाद का वो स्टूडेंट था, ही वाज अ नेशनल लेवल चेस प्लेयर, वो उसके पास एक प्लस पॉइंट था। तो उसने ड्यूरिंग इंटर्नशिप पे उसने कैट के 2 बार एग्जाम दिया, तो 99.8 कुछ परसेंटाइल आ गया था उसका। ही गॉट कॉल फ्रॉम आईआईएम और उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह थे, तो ही गॉट शॉर्ट लिस्टेड ओवर देयर। छोड़ दिया सीए फाइनल, किया ही नहीं सीए फाइनल बाद में। फिर सीए फाइनल बाद में आके कर लो। बाद में कर लो या जरूरत ही नहीं, एक बार आईआईएम में घुस गए, इट्स अबव एवरीथिंग। हाँ वो भी है। हाँ तो बी स्कूल के हिसाब से फोकस रखो। अब जैसे बाहर जाके जीमैट कर रहा है ना, तो जो देवेश ने बोला आपको एनजीओ के साथ एसोसिएशन रखना ना, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। इन दिस 3 years ऑफ आर्टिकलशिप, फोकस ऑन योर रेज्यूमे बिल्डिंग। आपने काम क्या किया वो शिट मैटर करता है, बस मैं जैसे मैंने बोला काम चेंज हो जाएगा 3 साल बाद, दिस इज चेंजिंग लॉ। आपने काम कैसे किया और उससे क्या सीखा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा लोग है ना अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यार मैंने ना मेट्रो सिटी में इंटर्नशिप नहीं किया, मैं क्या ही कर पाऊंगा लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको वो जो है ना एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना बहुत जरूरी है इंटर्नशिप। वो तो है, लेकिन ये नहीं कहने का मतलब मेरे को काम सीखना है या मुझे बिग फोर में जाके एक बार उनका वर्क जो कल्चर देखना है। हाँ हाँ वो तो है, देखो कल्चर तो ऑब्वियसली एक 1 2 3 स्टेप्स अहेड ही। अब जैसे आप एटिकेट्स की बात करें, अब बिग फोर में एकदम प्रोफेशनल ड्रेसिंग, सब प्रोफेशनल वे में बहुत सारी चीजें होती है, वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती है, तो वो एक दो प्लस पॉइंट है। बट ऑन दी अदर हैंड आप नॉर्मल फॉर्म में करोगे, मतलब मिड साइज फॉर्म में करोगे, तो आप एडिशनल कोर्सेज ज्यादा कर सकते हो। जैसे उसने बताया यूडेमी पे कोर्सेस है, आप इतना ऑनलाइन इतना कंटेंट अवेलेबल है कि मतलब एक जिंदगी कम पड़ जाएगी पूरा सीखने को। जो मिड साइज फॉर्म वैल्यूएशन मॉडल्स, टाइम ज्यादा मिलेगा मुझे अवेलेबल इसलिए हाँ टाइम मिलेगा एज कंपेयर टू नो। अब वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नो कौन सी फर्म चूज कर रहे हैं, वहां पे किस टाइप का काम है। हाँ अब जैसे बिग फोर में तो है ना 10 आउट ऑफ 12 मंथ्स देयर इज अ प्रेशर। 10 आउट ऑफ अप्रैल मई जून तो कब निकलेगा पता ही नहीं चलेगा बिग फोर में, हाँ लिस्टेड क्लाइंट रहने की वजह से। हाँ। तो जैसे आपने बोला बोर होते एक टाइम के बाद, और हाँ बोर हो जाते हैं। अब बोर कब होते हैं, जब आपने जेस्ट फॉर लर्निंग छोड़ दी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि भाई मैंने एक एरिया किया है ना, अभी मैं बाद में भी वही करूंगा, ताकि मैंने मतलब लर्निंग कर्व मैट्रिक्स है, एक बार वो काम कर लिया तो दूसरी बार इजीली हो जाएगा। बट मेरा अप्रोच वैसा नहीं था। मैंने एक बार एक किया ना, मैंने सेकेंड टाइम कुछ और लिया, थर्ड टाइम कुछ और लिया, ऐसा करके मैंने ना लिस्टेड कंपनी को ऑलमोस्ट 50% ऑफ बैलेंस शीट कवर किया मेरा आर्टिकलशिप में। यानी नहीं आपने एक टाइम एक लिया एक टाइम दूसरा, यानी ऑडिट से टैक्स में गए ऐसा? नहीं। अब जैसे ऑडिट लिया ना, अब जैसे मैंने बोला कि अब जैसे बैलेंस शीट में ऑडिट में बोरोइंग है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड असेट है, अच्छा और तुम्हारा डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कैश एंड बैंक है। तो बहुत सारे आर्टिकल्स है ना, साल 2-2 साल सिर्फ कैश बैंक ही करते हैं बिग फोर में। हाँ तो ये तो पवन, दिस पॉइंट आल्सो अप्लाइज इन स्मॉल साइज एंड मिड साइज हाँ फर्म। अगर आप में जील नहीं है ना लर्न करने का, तो आपको स्मॉल साइज मिड साइज फर्म में भी छोटा मोटा काम ही मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो उधर भी आपको बड़ा काम मिलेगा और पूरा पूरा एंटिटी हैंडल करने को मिलेगा। अब जैसे मैं लर्निंग यहाँ के फर्म की बात करूँ तो मेरे पास ऐसे आर्टिकल्स भी है जिन्होंने फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में लगभग 15 टैक्स ऑडिट करी है, सेकेंड ईयर में उन्होंने 40 टैक्स ऑडिट कर लिया उसी टाइम फ्रेम में। और वैसे सेम दूसरे आर्टिकल है जिसने फर्स्ट ईयर में 15 किया, सेकेंड ईयर में 20 किया उतने टाइम फ्रेम में। तो उनका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। हाँ सच तो इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ना काम क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे कर रहे हो और उससे क्या सीख रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये कैसे सीख कर रहे क्या सीख रहे वो आगे वो एक बार है। वो पूछते हैं इंटरव्यूज में, हाँ काम में आएगा ना हाँ मेन। यस तो लाइफ को आगे बढ़ाना प्रैक्टिकल नॉलेज पे डिपेंड। सॉरी सर फॉर और इंटरप्टिंग बट सॉरी सर फॉर इंटरप्टिंग सर, मैंने कितनी बार ये मिथ सुन रखी है कि बिग फोर में एक बार जब डाल देते हैं किसी भी एक जगह में, वो आपको उसी जगह पे रखते हैं और उसी जगह पे आपको वो करना पड़ता है, चाहे अपन कुछ भी ट्रांसफर नहीं ले सकते। और किसी भी लाइक अगर बैंक ऑडिट में डाला तो वो बैंक ऑडिट ही कराते रहेंगे, हाँ बैंक वो ऑडिट ही चीज तो है कराते ना। रहेंगे एंड अब जैसे बट जैसे वो मैंने बोला ना, अब फिर अपन को मैं और ऑल कुछ वाइज, एक्सपोजर। हाँ सर इसके कहने का मतलब है एक बार अगर अपन No, we ऑडिट ले got लेते it, तो got ऑडिट it. में लेंगे। Rishabh, I just want to let you know that's what we are trying to say. If you are learning enthusiast, then you can ask for, this is your right. First of all, you can ask to them that I want to do some different thing in first year, and in second year I want to do some different thing. If you literally have learning potential, they will definitely give you that place.
अभी उन्होंने जैसे बोला कि कोई आर्टिकल है वो 2 साल तक कैश एंड बैंक ही कर रहा है, ठीक है? आप तो फिर भी बैंक ऑडिट की बात कर रहे हो। उसके अंदर भी स्पेशलाइज़ सिर्फ़ कैश एंड बैंक ही कर रहा है 3 साल तक, बिकॉज़ या तो उसको कुछ करना नहीं था या उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था कि उसको कुछ दिया जा सके। अगर आपको लिटरली अगर आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आओगे और आर्टिकलशिप पूरा अगर आप सोचते हो कि मेरे को बहुत अच्छे से सीखना है और आप में अगर सीखने की इच्छा है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और वही वो इतना टाइम से बोल रहे हैं कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ और खुद अपने राइट्स के लिए पीछे पड़ो। आप अपने राइट्स के लिए बात करो कि दिस इज माय राइट टू हैव अ डिफरेंट एक्सपोजर एंड एक्सपोजर इन डिफरेंट सेक्टर्स आल्सो। दे डेफिनेटली गिव यू द अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पे रखेंगे। 100 में से सिर्फ 10 लोग ऐसे होते हैं और वो 10 लोग को अगर आप देखोगे तो शायद आपको खुद को ऐसा रियलाइज हो जाएगा कि यार अगर मैं इससे बेहतर हूँ तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको दिखाना पड़ेगा दैट यू कैन डू द बेस्ट एंड they always evaluate your performance. We have performance evaluation cycle also. Your manager is keeping eye on you. आपको बराबर देखेंगे वो कि आप किस तरह के लर्निंग एंथुजियास्ट हो, तो आपको पहले अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं कि आपको कुछ और सीखना है क्या। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में दे गेट टू नो अबाउट यू। वो तुम्हें देखेंगे कि तुम किस तरीके से काम करते हो एंड सेकेंड ईयर में वो तुम्हें पूरा अपॉर्चुनिटी देंगे। तो शायद सेकेंड ईयर में ही तुम अपनी क्लासेस मिस करोगे, सेकेंड ईयर में ही तुम्हारा वर्क आवर्स बढ़ेगा। डजंट मीन्स कि तुम किसी चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हो। हम आपको यही चीज बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर आर्टिकलशिप में प्लान करने वाला होना चाहिए, सेकेंड ईयर पूरा लर्निंग वाला होना चाहिए। बट वो फर्स्ट ईयर आपको ये भी डिनोमिनेट करेगा सेकेंड ईयर आर्टिकलशिप में कि आपको कितना काम और कहाँ कितना काम करना है। एक्सपोजर उस हिसाब से मिलता है। एंड ऑल्सो इट इज बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर मैनेजर। फेवरेटिज्म बोलते हैं हम इसको। अगर आपके अंदर वो है पोटेंशियल तो डेफिनेटली यू विल बी फेवरेट ऑफ योर मैनेजर। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक्सपोजर नहीं, बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आपको बैंक ऑडिट में रखा तो बैंक ऑडिट में रखेंगे। यही पवन पवन वाज टेलिंग बिफोर कि ये सब चीजें हो सकता है आपको आफ्टर बिकमिंग प्रोफेशनल और आफ्टर बिकमिंग सीए शायद आपको ये चीज करने को मिले कि आपको स्पेशलाइज करेंगे। बट आर्टिकलशिप में ऐसा नहीं होता बिकॉज शुरू में आपको शायद वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करवाएंगे, बट जब आपको पता चलेगा कि वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स कैसे देखते हैं, तब आप उसको ड्राफ्ट कर पाएंगे और आप उसको डॉक्यूमेंट कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर में आपको अपना नॉलेज एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। फर्स्ट ईयर में वो आपको देखेंगे कि आप किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसका कंक्लूजन ये है। भैया एक ऐसा भी होता है कि फोर में जाने का रीजन ये होता है कि वहाँ की फैसिलिटीज और वहाँ का जो स्टाइपेंड और वहाँ का जो यानी कहने का मतलब वहाँ जो घुमाते हैं यानी घूमने के लिए क्लाइंट्स प्लेसेस पे भेजते हैं ना, उनके क्लाइंट्स भी इतने औसम होते हैं कि उस चक्कर में फर्स्ट ईयर जाते हैं और फिर वहां से ट्रांसफर लेके सेकंड ईयर में कहीं और काम सीखने के हिसाब से। देखो फर्स्ट थिंग इज कि आप पहली चीज है कि आपको काम सीखना है या स्टाइपेंड चाहिए। अगर आपको स्टाइपेंड के पीछे जाना है तो मैं आपको आगे और अपॉर्चुनिटीज बताता हूँ जहाँ आपको 1 लाख रुपए महीना भी मिलेगा। ठीक है, आप काम कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ पैसा मिलेगा। अगर आप पैसों के पीछे जाएंगे तो एक्सपोजर नहीं लेंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर सीखना है, मैं आपको एक ऐसी फर्म बता सकता हूँ जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर इतनी फेमस है, मिड साइज है, इतनी फेमस है कि आर्टिकलशिप में आपको स्टाइपेंड मिलेगा 2 से 3 हजार। बट वंस यू आर क्वालिफाइड तो आपको 15 से 20 लाख का पैकेज बहुत आराम से मिलेगा। जबकि बिग फोर्स में भी शायद आपको इतना पैकेज ना मिले, इवन इफ आपने शुरू में स्टाइपेंड इतना कमा लिया। पवन जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, शायद ही स्पीकिंग ऑफ बंसी मेहता करके एक फर्म है मुंबई में, जो उसका जो मैनेजिंग पार्टनर है ना, जब बजट अनाउंस होता था ना, डायरेक्ट टैक्स का बजट, उसका एनालिसिस वो आजाद मैदान पे देता था मुंबई में। एंड रेडियो पे सारे इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनते थे उसका एनालिसिस। और जो बिग फोर में आज E&Y जो टैक्सेशन का मास्टर माना जाता है पूरे कंट्री में, जो पार्टनर्स ऑफ ऑल द बिग ऑल द पार्टनर्स, मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स ऑफ E&Y हैव गॉट देयर ट्रेनिंग फ्रॉम बंसी मेहता एंड दे स्टिल पे 20 to 25,000 पर मंथ टू अ चार्टर्ड। बट एक बार 2-3 साल वहां पे कर लिया, 2 साल सीख लिया ना, तो यू नो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है उसके करियर में। तो स्टाइपेंड इज अ शॉर्ट टर्म मनी। आप शॉर्ट टर्म के पीछे मत भागो। यू आर फॉर अ लॉन्ग टर्म करियर। सीए एक आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, सीए इज योर लॉन्ग टर्म गोल। तो आपने क्या बताया बंसी मेहता करके मुंबई में फर्म है। कोई स्पेसिफिक फर्म्स का नाम ऐसे नहीं बता रहे, हम आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं कि जो स्टाइपेंड के पीछे नहीं, वर्क एक्सपोजर के पीछे जाता है, अभी कम कमा लेगा लेकिन आगे जाके उसके नॉलेज के हिसाब से उसको बहुत पैसा मिल जाएगा। तो भैया क्यूमुलेटिव देखो, कभी भी शॉर्ट टर्म मत देखो, क्यूमुलेटिव देखो कि आप कितना ग्रो कर सकते हो। इट्स अबाउट एक्सपोजर। हम हमारा सीवी अभी अपलोड कर रहे हैं सब जगह, तो अभी यानी हम हर जगह पे अपलोड कर रहे ताकि हम सीख सके, वॉक इन इंटरव्यूज दे रहे हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक आप ऐसे सजेस्ट करो कि कहाँ पे काम सीखने को मिलेगा
ऐसी जो आप बता रहे हो बंसी अब मेहता आपका जैसे Q&A खत्म होगा तो हम अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। नहीं तो आप ना मतलब यू कैन नो पर्सनली डीएम अभिनव और मी, मतलब हम कॉन्टैक्ट शेयर कर लेंगे। तो एक जितना हमको आइडिया है, बिकॉज बीइंग इन मुंबई फ्रॉम लास्ट 4-5 years, एक अच्छा आइडिया है कि कौन सी फर्म में क्या ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, और मतलब यू नो क्या साइजेबल फर्म है वो, मिड साइज, स्मॉल साइज और बिग फोर, नॉन बिग फोर जो भी। तो एक उसका एक हम ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं, बट ऐसा एकदम दैट वोंट बी एन अश्योरेंस कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सीखने वाला। बहुत बार लक पे डिपेंड करता है। जैसे आई वाज वेरी लकी एज अ बिग फोर आर्टिकल, बिकॉज मुझे मेरे करियर में आई गॉट टू वर्क ऑन अ यू नो प्राइवेट लिमिटेड क्लाइंट होली, मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड क्लाइंट पूरा मेरे को 2 महीने के लिए दिया गया था, नॉट टर्नओवर ऑफ 400 crores ओनली, बट आई गॉट टू लर्न लॉट मेनी थिंग्स बिकॉज एंटायर P&L एंड बैलेंस शीट वाज इन माय हैंड। बट लिस्टेड क्लाइंट्स पे क्या होता है, देयर इज नो, जो लिस्टेड क्लाइंट मैंने 1.5 year किया, वहां पे 40 पीपल का टीम था ऑडिट करने का, 40 पीपल। In that 40 people there were 20 to 25 chartereds in that listed group। क्या लर्निंग होगा उसमें, वैसा है वो। और सेम इन केस ऑफ स्मॉल साइज। तो सर पवन सर, आपने उस क्लाइंट जो आप एग्जांपल दे रहे थे, उस क्लाइंट पे क्या क्या वर्क किया जस्ट फॉर एक्सपीरियंस? I अब जैसे think देखो नहीं, फर्स्ट, Pawan, actually I think we should move forward with our topics. This Q&A we can do afterwards. Maybe half of the questions will automatically get wiped off after the अभी next कुछ session ऐसा or बचा next क्या topic. है Yes, स्पेसिफिक? आई first थिंक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में industrial बताया। training is okay. First and foremost, major thing is difference between your traditional articleship and modern articleship. At our time, okay fine, I'll take the topic. At our time, we only know that articleship का मतलब होता है 3 साल ऑफिस में जाना है। तब तक हमें कुछ पता नहीं था कि ऑफिस में जाके करना क्या होता है एग्जैक्टली। जब हम लोग ऑफिस में गए तो हमको उन्होंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आपको टैक्स ज्वाइन करना है या ऑडिट, एंड वी वर ब्लैंक, हमें वो भी नहीं पता था कि क्या होता है। In modern, in traditional articleship we can see audit and taxes. In audit we can see statutory concurrent internals, and in taxation we can see direct and indirect taxation. That was the articleship in traditional manner. But nowadays in modern articleship you get more areas and more wider scope, you can say. A few of the areas may be investment banking, risk management, venture capitalist, FP&A, finance, accounts, specific taxation, or deals, due diligence, or risk management. So, what are they? In modern articleship, we can say that आज जो स्टार्टअप्स हम नए देखते हैं या जो भी नई चीज़ें आज के एरिया में हैं, लाइक मोस्टली द थिंग्स आर बेस्ड ऑन आईटी, एंड इन ट्रेडिशनल आर्टिकलशिप इट वाज नॉट देयर। बहुत सी चीज़ें मैनुअली की जाती थी, बुक्स मैनुअली मेंटेन होती थी। मॉडर्न टाइम में आफ्टर emerging of your IT, you can say that there are more risk, so there is risk management, and you are seeing more fraud, so there is forensic audit also for that, and specialized in taxation. Now we have good imports and exports, balance of payments, so we have international taxation also. India is growing and developing nation, and I should not say, but more of the employees are from India who is outsourcing their services to different countries. So we have a good work exposure in India if we are trying to identify. So अगर आप बोलेंगे कि हमें आर्टिकलशिप कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सो द थिंग इज कि कौन सा एरिया आपको करना है। आपको इन्वेस्टमेंट बैंक, आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, सर्विस में जाना है, या बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाना है। अब मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो देर आर डिफरेंट एरियाज, सर्विसेज में देर आर डिफरेंट एरियाज, बैंकिंग एंड फाइनेंस में देर आर डिफरेंट एरियाज। You might have seen and you are also might be aware about Shark Tank. So in Shark Tank you see there are venture capital and angel investors. What they are doing, they are analyzing the values of the firm, and on the basis of valuation they are investing the money into that particular investment or company, you can say. So how we are analyzing that, so that may also be part of your articleship, so that you have to decide in what area you have to go. If you have to go for investment banking, so I think only articleship doesn't matter. I think you might have some different courses also. Some of the organizations are providing investment banking courses and financial modeling courses, as Devesh explained and Pawan also added on that, that you can do some courses from Udemy which will help you out in these things also. Because restricting yourself only into the articleship and traditional articleship is not sufficient in this uh, time, you can say, when we are emerging ourselves. Sir, You can sorry for the interruption.
सर एक्चुअली आपने आईबी के बारे में अभी बोला, जैसे आईबी बहुत अच्छा रहा, तो आईबी के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज कवर होती है जो हम एज ए करियर चूज कर सकते हैं? बिकॉज आईबी में तो 4-5 एक्टिविटीज रहती है, फ्रॉम आईपीओ टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फंड रेजिंग एंड अदर थिंग्स। तो क्या क्या रह सकता है एज अ बिगिनर टू लर्न फ्रॉम दैट? No issues. That is in my topic only. I'll just continue and we can have Q&A session later on. I think it will be covered in that part only. So the next thing would be in what area you can do articleship, that is covered. But in what firm you should do. Big fours are providing risk सो management also. Sorry. सर अभी आपने जस्ट कहा था कि कितनी बार ये मैन्युफैक्चरिंग इनमें भी होता है, लेकिन कितनी बार अपन देखते हैं कि अपन को टैक्सेशन ही नहीं मिलता, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन कैसे हो सकता है आर्टिकलशिप में? जैसे कि टैक्सेशन में इतना एक्सपोजर नहीं मिलता कितनी बार, जैसे कुछ बार मैंने बात करी तो वो टैक्सेशन में इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में कैसे मिल रहा है? It depends upon firm to firm. Few firms are specialized in taxation, few firms are specialized in audit, few firms are specialized in different areas. So you have to choose the correct firm. That's what I'm trying to say. आपको पहले अपना एरिया डिसाइड करना है कि आपको कौन से एरिया में आर्टिकलशिप करना है एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज द फर्म. इट डजंट मीन्स कि सारी फर्म हर चीज सारा एक्सपोजर आपको दे सकती है. मॉडर्न आपको ट्रेडिशनल आर्टिकलशिप शायद सब जगह मिलेगा बट देर आर फ्यू स्पेशलाइज फर्म जैसे ट्रांजेक्शन स्क्वायर हो गया, ऐसी 2-3 फर्म्स हो गई, ध्रुवा हो गया. सो ध्रुवा एडवाइजर्स आर ओनली फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन. अगर आप वहां जाते हो और आपका आर्टिकलशिप अगर वहां हो जाता है देन यू कैन गेट मोर एक्सपोजर इनटू इंटरनेशनल टैक्सेशन देयर. आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया के हिसाब से बेस्ट फर्म कौन सी. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपको सही जगह पे जाना है. पहले आपको एरिया चूज करना है फिर आपको सही जगह पे जाना है. So that is the basic difference which you should understand. What is difference between modern articleship and traditional articleship? क्योंकि हमें ट्रेडिशनल भी नहीं पता था और आज के टाइम पे मॉडर्न आर्टिकलशिप बहुत इवॉल्व हो चुकी है, बहुत जगह अपॉर्चुनिटीज मिलती है शुरू से सीखने की. सो वो चीज़ बहुत ध्यान रखना है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बिग फोर्स एंड मिड साइज और स्मॉल साइज को हम हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं. Lalit has done from small size, but he's having very good exposure, and he's getting very बहुत fast इसको promotions मिल रहे हैं on the basis of his experience. और वो एक्सपीरियंस आया है इसको स्मॉल साइज से. सो डजंट मैटर्स कि आपने बिग साइज से किया तो आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है. इट इज ऑलवेज अबाउट योर लिमिट्स. जितना आप अपने लिमिट्स को पुश करोगे उतना आप आगे जाएंगे. And another thing is industrial training, which we are covering right now. So first of all, what is industrial training? Industrial training is a part of your articleship. Is it mandatory? No, it is not mandatory. It is part of your articleship. You can either join or not join. It's up to you. What is the stipend for industrial training? So industrial training stipend may vary from 15,000. That is the industry standards up to 1 lakh rupees per month. What are the industries specific? As I already mentioned, it is manufacturing, service, and banking and finance. In which company you can get industrial training? You can get industrial training only in the company who is registered with ICI. Okay, so first of all, you will ask me that industrial training के लिए हमें क्या करना होगा. So first and foremost thing, काफ़ी फर्म्स आपसे इनिशियली पूछ लेती है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाना है या नहीं जाना है. हो सकता है शुरू में हम लोग को पता भी नहीं हो कि हमें जाना है कि नहीं जाना है, बट एनीवेज यू हैव टू गिव अ नोटिस ऑफ 3 months. एंड प्रोसीजर आर्टिकलशिप का 102 103 होता है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का 104 एंड 105 होता है फॉर्म. लीव्स कितनी होती है तो सिर्फ एक लीव्स बोलेंगे एक डिसएडवांटेज पार्ट होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, जो शायद इसलिए शब्द लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं भी करते. लीव्स आर अराउंड 3 months. इट मे समटाइम इंक्लूड योर एग्जाम डेज ऑल्सो. And from where you can get industrial training, so ICI also have dedicated platform for industrial training, or you can approach via LinkedIn और मेल या फिर रेफरेंस है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना लिंक्डइन बहुत स्ट्रांग बना के रखना, चाहे वो आर्टिकलशिप भी हो. अपना लिंक्डइन एकदम अपडेटेड और एकदम स्ट्रांग बना के रखना. जितने भी कोर्सेज तुम कर रहे हो अपने साथ लिंक्डइन पे जोड़ते चलना. सोशल मीडिया इज डिफरेंट थिंग बट लिंक्डइन इज मोर स्पेसिफाइड टू योर प्रोफेशनल थिंग्स, सो यू शुड अपडेट इट अकॉर्डिंगली. In what areas you can do industrial training? It may be investment banking, risk management, venture capitalist, FP&A, that is financial planning and analysis, finance and accounts, taxation, merger and acquisition, deals, due diligence, जो अपना नॉर्मल होता है. एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी? इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए. अब इंटरमीडिएट क्लियर का मतलब है कि बोथ ग्रुप्स क्लियर होना चाहिए. Is it mandatory? So no, it's not. It's part of your articleship. Last and foremost thing is advantages क्या हो सकता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के. सो फर्स्ट इज न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस. सेकंड इज इंटरेक्ट विद मेंबर्स विद डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग्स. क्योंकि आप थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में भी होते हैं, सो ऑफिस टाइमिंग्स उसमें फिक्स्ड होते हैं मोस्टली. कभी कभी प्रेशर है तो है.
हाई स्टाइपन है उसका, गुड कॉन्टैक्ट्स फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, इट डेफिनेटली एड समथिंग इन योर CV टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग. And if you talk about tenure, so I don't know why it is written there 12 months, because in announcement of 13th August 21, there has been announcement by ICA only that you can have article industrial training tenure of 9 months to 18 months, and somewhere it is written only 12 months, which was earlier. Right now I have seen many places where they are offering 18 months industrial training. If I give you brief about finance and accounts, it helps in preparing financial statements and all. Taxation, it helps in tax filing, preparation, preparing working and all. Yeah, in investment banking, it was your question. In investment banking, it deals primarily with raising money for companies, government, and other entities. Also include underwriting and underwriting debts and securities. Another thing is venture capital. So venture capital means private equity investor that provide capital to companies with high growth potential in exchange for equity stake. FP&A के अंदर आप ये देख सकते हो कि you are in charge for business forecasting, playing with numbers but with critical eyes. In risk management, it's assessing, measuring, and mitigating the organization exposure to operational threats. If I go in deep, finance and accounts is very clear. आपको financial statement बनाने में help करना है, group reporting में help करना है. Taxation means filing of taxation and all. Investment banking and VC are exactly opposite thing. Investment banking में आप कंपनी के लिए पैसा लेके आते हैं, वेंचर कैपिटल जो होता है वो कंपनी के अंदर पैसा डालता है. वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है वो ऐसी कंपनीज में पैसा डालता है जो ग्रोइंग एंड एमर्जिंग है, जैसे स्टार्टअप फाइनेंस या जो शार्क टैंक में आप देख रहे हैं, न्यू कंपनीज एंड द कंपनीज हु आर मोर इनटू द स्टार्टअप्स. तो आप उनका बिजनेस पिच और वो सब देख के आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं इन सीड राउंड एंड डिफरेंट राउंड्स. FP&A होता है, आज हमने कितने सारे बोर्ड मीटिंग्स या कुछ देखे होंगे जहाँ पे कंपनी बोलती है कि इतना % ग्रोथ हमने रीच किया है और इतना % हम नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट ईयर में रीच करेंगे. तो वो जो फ्यूचर फोरकास्टिंग है वो कौन करता है? FP&A करता है. तो ही इज द इंचार्ज फॉर बिजनेस फोरकास्टिंग. वो देखता है कि आगे हमें बिजनेस कैसा ग्रो करेगा, considering your previous experiences, playing with EBITDA, PAT, and all. And risk management, of course, in today's area, today's arena, there are high risk in each and every area, especially with the operations. So assessing and mitigating the risk is the only part for risk management, but it also has a wider scope. So now the question will be that uh, articleship versus industrial training. अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए इतना अच्छा बोल दिया है तो हम आर्टिकलशिप करें ही क्यों, हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही कर लेते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू गो फॉर ओनली कॉर्पोरेट जॉब, सी कॉर्पोरेट जॉब इंडस्ट्री के अंदर ही जाना है तो यू कैन गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. अकॉर्डिंगली आपको जिस कॉर्पोरेट जॉब में जाना है उसका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ट्राई करो, सो दैट यू कैन गेट गुड एक्सपोजर देयर. अनदर थिंग इज एक्सपोजर. अगर आपको आर्टिकलशिप में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, मैनेजर से अच्छी बन रही है, हर चीज़ एकदम प्लान्ड है, देन रिमेन इन आर्टिकलशिप. देयर इज नो सेंस ऑफ गोइंग इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. अनदर थिंग इज लीव्स. आपको लगता है लीव्स कम है, बहुत ज़्यादा कम है, मैनेज नहीं हो सकता, तो स्टेट आर्टिकलशिप, नो इश्यूज. अनदर थिंग इज स्टडी. अगर आपका स्टडी एकदम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टेन्योर से पहले, अगर आपने काफ़ी पोर्शन खत्म कर दिया है, वेल यू कैन गो, एल्स इट विल डिसरप्ट योर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑल्सो. Another thing is a stipend, but as I told, don't run for only stipend. It may vary from 15,000 to 1 lakh per month, but doesn't means you go for stipend and later on you are not getting any good exposure for that. So that is the part for industrial training. And the only thing is, which Lalit also used to tell us, that please guys come out your comfort zone. This is the learning time. We are going for exposure, and we are not here. We are not left our home just to do, time pass or just relaxing here. Abhinay, I want to add one point. Sure, definitely. Yeah, like you said that you get the opportunities in IB, investment banking, FP&A. You will get the opportunity when you done your 1 year or 2 year of articleship right. Means you have a good experience when you can easily get dragged into the like Abhinav said that IB or these rounds, because I know one guy from our hostel who gets into the investment banking from JP Morgan. Among the 500 students, he was only get selected, right? He was only get selected because of his articleship experience. His articleship experience was in the some kind of mutual fund industry, so he gets the opportunity in that investment banking side. Yes, correctly mentioned by Lalit.
And the only thing which I'm trying to say is it's about articleship is all about your exposure. Please run for the exposure. How much exposure you will get, it will add your cumulative experience. Cumulative always grows. You know the exponential power of accumulation. That only we want to say. Please come out of your comfort zone. So Devesh was here. He is doing investment banking in the articleship only, and he used to have some private clients and interaction with them. So along with it, he was managing NM college regular student. So that is also an achievement because he is managing the time. He's going from home at 6:15 a.m. in the morning and coming back to home at 10 p.m. He know he has to push his limits to get the best. Anything you would like to add, Pavan, Lalit, or else we can have a Q&A session. No, I think let's have Q&A session now. Before So that, I it's think we already just have to just go through once via the with one topic. I think we have few students who have appeared for intermediate and cleared only one group, and they want to ask and they want to know about Hmm. whether they should start the articleship or they should wait for clearing their group two. So if you can take the Huh, topic. so what's in my opinion, you should not wait for clearing your second group. First and foremost thing, what is guarantee that you have prepared? You will prepare for 3 months and you will clear that group in second, coming exam also. You may take one more attempt बिकॉज आईसीआई का भरोसा नहीं है मतलब उसने अगर सपोज उसी ग्रुप के दो पेपर टफ कर लिए या आपने एक सब्जेक्ट को लाइटली लिया वही सब्जेक्ट टफ आ गया that one subject may also cost you like most of the people funk in audit or EIS in intermediate. सो वहाँ पे स्कोरिंग डिफिकल्ट होता है बट अगर आपने इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं किया तो दैट मीन्स यू आर डेफरिंग योर सी ए फाइनल एग्जाम बाय 6 months. और ये कंपटीशन कितना इतना क्यूरियस हो गया ना मतलब इन आर अटेम्प्ट देयर आर ओनली 3,000 to 4,000 students who were cleared both groups. Result was very low for 4 5 years down the line. But nowadays, every exam mein there are 12 to 15,000 chartered accountants qualifying in India. सो कंपटीशन इज वेरी फियर्स. सो और ये आपके रेज्यूमे पे भी इम्पैक्ट करता है कि कि सिर्फ एक मतलब जो हायरिंग वाले लोग हैं उनको पता है कि इंटरमीडिएट के सेकंड ग्रुप के प्रिपरेशन को कितना टाइम लगता है. अगर आपने एक बार ऑलरेडी उसका कोचिंग ले चुके हो, आपने एक बार अपियर करके एक कुछ सर्टन डिफरेंस की वजह से आप सर्टन मार्क्स की वजह से यू फेल्ड इन इट, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे. एक 30 days के या 20 to 25 days के स्टडी लीव्स के ऊपर यू कैन क्लियर दैट सेकेंड ग्रुप. और अगर उसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट इसमें तो डेफिनेटली हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ऐसा होता है. अभी मेरे सामने ऐसे एग्जांपल्स है. आई यूज्ड टू टेक आई एम टेकिंग ओरिएंटेशन क्लासेस एट माय टाउन. तो वहां पे एक स्टूडेंट ने ऐसे ही किया था. लास्ट जब ओरिएंटेशन बैच में वो आया था, ही क्लियर्ड फर्स्ट ग्रुप बट व्हाट ही सेड इज सर मेरे को है ना सेकंड ग्रुप क्लियर करके, दोनों ग्रुप क्लियर करके आई विल गो टू बिग फोर फॉर आर्टिकलशिप. व्हाट हैपेंड इज कि इस बार उसका सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं हुआ. सो दैट टाइम कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और काफी कुछ पीछे छूटा ऐसा लग जाता है. बिकॉज पीयर प्रेशर भी आ जाता है, एक साल आगे चले जाते हैं वो. तो जब अपॉर्चुनिटी है यू कैन क्लियर. और कैसा है ना, फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में इतना प्रेशर भी नहीं होता है. तो फर्स्ट 6 months में तो क्या ही प्रेशर होगा, बिकॉज आपको कुछ चीजें ज्यादा पता ही नहीं. आप कीबोर्ड पहली बार लाइफ में हाथ में ले रहे हैं तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाला जाता है, आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं होता है उतना. सो आप हायरिंग के टाइम पे ही मैनेजर को बता दीजिए कि ऐसा ऐसा माय केस है. नो यू कैन प्रोजेक्ट टू योरसेल्फ कि व्हाट प्रिपरेशन टाइम यू नीड फॉर योर क्लियरिंग ऑफ सेकंड ग्रुप. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि डोंट वेट. फर्स्ट थिंग इज इट इम्पैक्ट योर रेज्यूमे. स्ट्रेट अवे इट इम्पैक्ट योर रेज्यूमे. जब फ्यूचर में जब आपको मतलब कहीं पे जॉब वगैरह करना होगा तो इट विल अफेक्ट, या बी स्कूल वगैरह में जाना होगा तो इट विल अफेक्ट योर रेज्यूमे. एंड सेकंड थिंग इज गारंटी क्या है कि आप वो एग्जाम क्लियर हो जाओगे आपने ले ली तो 6 months वेस्ट हो जाएंगे करियर के. तो मेरा ऐसा पॉइंट है. ललित तुमको कुछ कहना है इस पे या एनीवन क्वेश्चन कोई है अगर ऐसा कैंडिडेट? यस संपदा. सर आई वांट टू आस्क दैट मैंने सुना है जैसे कि ट्रांसफर केसेस जो होते हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे जो टॉप 10 सीए फर्म्स हैं
वो ट्रांसफर केसेस नहीं लेती हैं, तो उसके बारे में थोड़ी नहीं, ऐसा क्लैरिटी कुछ नहीं चाहिए है। थी। सी, आउट ऑफ बिग फोर, two of the big fours, can I name it, Abhinav? Okay. So Yes, yes, you can. जैसे टॉप 10 फर्म्स में जो मुझे पता है, टॉप 10 फर्म में से देयर आर 4 फर्म्स इन मुंबई, 4 to 5 फर्म्स एटलीस्ट दे टेक ट्रांसफर केसेस। एक बिग फोर है जो 3 मंथ्स का ट्रांसफर केस लेती है, एक बिग फोर 6 मंथ्स का ट्रांसफर केस लेती है, एक बिग फोर मतलब 1 ईयर तक का भी ट्रांसफर केस लेती है। सो नहीं आता है, बट हाँ, ट्रांसफर केसेस में व्हाट इज द प्रॉब्लम इज यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, लाइक पार्टनर लेवल और डायरेक्टर लेवल रेफरेंस in that particular organization. So I think only ENY and KPMG take transfer cases. PwC and Deloitte strictly don't take transfer cases in Mumbai. And Grant Thornton और BDO ये भी transfer cases लेते हैं। और वो क्या है, पॉलिसी चेंज होते रहता है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है। कल जाके बहुत सारे इंटर्न्स ने मतलब एक साथ सपोज उनके पास काम ज्यादा आ गया और स्टाफिंग कम है, तो दे इवेंचुअली टेक ट्रांसफर केसेस। और Everything लेट्स से depends upon आईसीआई demand का, and supply. Yes. हाँ, अभी जैसे आईसीआई का रिजल्ट अभी 11% लगा, तो देयर इज लॉट ऑफ सप्लाई अमंग इंटर्न्स, बट वही रिजल्ट अगर 3-4% लेता ना, तो इवेंचुअली उनको ट्रांसफर केसेस लेना पड़ता है, बिकॉज स्टाफिंग का इशू आएगा इधर। सो ऐसा ओके कुछ सर, नहीं थैंक है, यू। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सर आई हैव अ क्वेश्चन। करंट सिनेरियो पे अगर आप देखो तो जैसे मई 23 अटेम्प्ट है नहीं किसी फ्रेशर के लिए, नवंबर 23 आएगा जस्ट बिकॉज कोविड में मई 21 अटेम्प्ट नहीं था, ठीक है, नवंबर था। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर नवंबर 23। उसका मतलब ये है कि दे विल गो फॉर एग्जाम लीव्स फ्रॉम जून। सो आप बोलोगे कि जून में ऐसा टाइम आ सकता है जब शायद ट्रांसफर केसेस चाहिए भी हो। आई एम नॉट श्योर, बट इफ यू सी द ट्रेंड्स देन यू कैन एनालाइज फ्रॉम दैट जून में हो सकता है कि ट्रांसफर केस लिए जाएं, लेकिन अभी नहीं भी ले सकते बिकॉज सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ओके सर, थैंक यू। Sorry, Khushbu, you were asking something. Sir, I was asking that you just told us that in first year we should focus on completing our classes. But sir, as we are aware about the new course and the changes that we are going to be done, should we consider about taking classes right now, like in the first year itself? See, not focusing on classes, focusing on certain topics, let's say audit or some topics of direct taxation. That is not going to change. The sections of profits and gains from business and profession or capital gains exemption, these sections are not going to change, and that will be in CA syllabus for forever, because we are masters of taxation and audit. So law may be changing, that subject may be going out, but audit and tax, this won't go. Even So you FR and just SFM have, also. even financial reporting also. SFM may have some changes, but if you see last 15-20 years, those topics have not changed. Old syllabus से new syllabus में migrate होने के बाद only AS to Ind AS हुआ है FR में. SFM में भी there is no vast change in topics. Only theory topics there has been certain changes. So there are certain topics of some particular subjects that you can keep on studying or updating yourself. So you are just in touch with that subject. और कुछ क्लासेस ले सकते हो, जैसे एसएफएम के कोचिंग क्लासेस you can definitely take in first year of articleship. Okay, sir. Because you have a more lean time in that tenure. So second year में you have office responsibility also, and क्लासेस का भी प्रेशर थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ हो जाता है, इसलिए वो प्रेशर बर्डन रिड्यूस करने के लिए आज इट्स सजेशन फ्रॉम आस है कि आप फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करो। अब हमारे टाइम पे वही हमारे साथ गलत हुआ था कि हमने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया था आर्टिकलशिप, तो क्लासेस तो सर मैंने इसका अपोजिट सुना था, लाइक मेरी एक डिलॉयट के आर्टिकल से बात हुई थी, उन्होंने मुझे रिकमेंड करा कि फर्स्ट ईयर के अंदर तो हमें काम सिखा ही रहे होते हैं वो, लाइक अपनी ERPs वगैरह अपने सब सॉफ्टवेयर पे, और मतलब 5-6 महीने तो हमें कम्प्लीटली डिवोट करने ही पड़ते हैं काम सीखने के लिए। फिर एक बार थोड़े हैबिचुअल हो जाते हैं तो हमें बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए कि कब हमें लॉग ऑफ कर ही देना है, लाइक कब खत्म, मतलब अब हमें पढ़ने के लिए टाइम निकालना है। हाँ, वो तो इवेंचुअली अभी सबका अपना अपना एक असेसमेंट होता है, बट मेरा ऐसा बोलना है कि फर्स्ट ईयर में यू हैव अ मोर लीन टाइम। अब जनरली लोगों का क्या अप्रोच हो जाता है कि यार अभी इंटर में इतना पढ़ाई किया है, बिकॉज 11, 12 फाउंडेशन, इंटर 3 साल कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा 1 साल ब्रेक लेते हैं मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। बट वो ब्रेक ना लेते हुए अगर कुछ सब्जेक्ट्स के आप टच में रहोगे तो इट वोंट अफेक्ट यू और इट वोंट डैमेज यू। आपको भले उससे फायदा ज्यादा ना हो, बट नुकसान कुछ नहीं होगा।
सेकेंड ईयर हम में लोगों जो के साथ है भी यही हुआ था कि हम लोगों ने तीनों ने सेकेंड ईयर शुरू के 6 मंथ्स जो है वो सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिए थे, एंड आफ्टर 6 मंथ्स वी स्टार्टेड आवर क्लासेस। बट स्टार्टिंग में वो एकदम अच्छा चल रहा था, लेकिन जब हम लोग सेकेंड ईयर आर्टिकलशिप में एकदम पीक टाइम से आए तो हमें पता चला कि हमारे सारे क्लासेस मिस हो रहे थे। सो लर्निंग फ्रॉम दैट मिस्टेक वी आर सजेस्टिंग यू दिस थिंग। और अभी तो ऐसा हो गया ना, अनलिमिटेड व्यूज वगैरह के लेक्चर्स मिलते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में भी देखो, वही सेकेंड ईयर में देखो। अब टाइम का यूटिलाइजेशन वैसा कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि यू डिवोट 3-4 आवर्स फॉर लेक्चर्स इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। एक हार्डली एक 1-2 आवर्स भी आपने स्पेयर कर लिया, 1 आवर इज ऑल्सो इनफ। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो आपने इंटर में पढ़ा है ना, वही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सीए फाइनल में, बट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्शन इज वे मच हायर, सो यू कैन डिवोट टाइम फॉर इट। और वो चीजें बदलने वाली है नहीं। और अदरवाइज यू कैन You can ask your question. Sorry, we are keeping you on hold for such a long time. No, not an issue. Hi. tomorrow is Actually, weekend holiday for Abhinav and Lalit, not for me. No, I'm working tomorrow. Yeah, same. I'm also Quarter working. end. Quarter end. Yeah. Mhm. yeah. So actually, I have a question regarding the industrial training wala cheez. Actually, personally, I see myself down the line doing something in finance. Like I have that interest sort of thing in finance, and to be very specific, investment banking, these private equity markets and all these things literally interests me a lot. And I have in my college days, right now I'm in college only, so I have been through these profiles, go Can you researching and introduce yourself by saying that you are in SRCC right now, and along with the yeah, course which you I have have cleared my CA intermediate right now, or both the groups, and right now I'm studying in Shriram College of Commerce, and in May June I'll graduate from the college as well. So I was just confused about the articleship thing, because I was I was in touch with Abhinav Bhaiya as well previously. So he told me about the modern articleship, that in modern articleship you get a chance to get articleship in these profiles also. So I just want to get to know that in the first year as only can we have that opportunity in these, to get articleship in these profiles. Like, do big fours give us opportunity in these profiles, or any other company for that sort of Like, matter, not only big fours, or any other company. I think there are very limited seats for that in current scenario. Maybe in future those posts may be increasing. जैसे बिग फोर में only there is one particular big four those hire which hires for M&A taxation. It's a part of investment banking only. Mergers and acquisition का जो डिवीजन है उसमें एक बिग फोर आर्टिकल्स रहता है. If you know Siddhant Bhandari, he has been EIR 1. He Yeah, has yeah, been everyone. He has been he here. was in M&A tax for 3 years. Yeah. हाँ, तो उसने 3 years आर्टिकलशिप M&A टैक्स में किया था, सब डिवीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. What my personal suggestion for you is, you should definitely go for CFA examination. अब जैसे second year of BCom हो गया है, so you should enroll yourself for CFA examination. And it Yeah, I offers have. scholarship he has also. already There is enrolled some for financial that. restrictions. हाँ. Yeah. For regarding CFA, I have So, already made up my mind to schedule my CFA exam for the November 2023. So regarding that, I'm also to an extent I'm confirmed that I'll give my CFA exams in November 23. Till today, I'm just focusing on the companies and profile sort of thing, that I want to sort of start off my career in with the finance thing. But yeah, somewhat some like in these last days, these relatives and all, they just give us so many recommendations and suggestions. So like they, I know, is it right or wrong? I just want to confirm with you. Like they just, everyone was saying that in the first year of articleship, do have an experience of either audit or tax, and then have a hands on some other profile which you want as per your interest. So like, is it? if you get a direct opportunity for an IB firm, then go for it, because audit and tax will won't benefit you much in future for you. एंड सेकेंड थिंग इज, अब जैसा तुमने बोला जो फील्ड है ना, इसका जो क्रीम जॉब है
that cream job is grabbed by graduates from IIM, IIM Okay. A, B, and C. I know one of my friend in IIM A. He has recently cracked a job interview of a package of 1.8 CR from a finance background, 2 to 3 years of experience as a chartered accountant, and then he's with an offer from Nomura Capital. I maybe knowing Nomura Capital, two Yeah, three Nomura, firms are there. Nomura Capital. So they have offered him a job of 1.8 CR, which was the highest package. और ये है ना ट्रेंड अभी सेट हो रहा है. अब पहले अगर 3 इयर्स पहले का ट्रेंड आप देखोगे तो जो हाईएस्ट पैकेज था वो आईआईटी प्लस आईआईएम लेते थे, बट अभी फाइनेंस में डिमांड बहुत ज्यादा है. Hmm. बिकॉज ये जो है ना, ये आने वाला टाइम इज फॉर एन इंडियन इकोनॉमी, लाइक एवरीवन इज सेइंग नाउ. Of So course. finance के लिए there's a lot of need, lot of demand, and very handsome pay. 1.8 CR, that means he can take a retirement at age of 30. Hmm. But that it comes with a condition: working hours of at least 15 to 16 hours. Yeah, that corporate culture will always be there. That will Yeah. not go away with you. Of There course. was also one student from our batch who did internship at some international bank in that field itself. So Mm-hmm. 12 months का internship किया. After CA he did internship, कुछ ऐसा program होता है, and then there was a job vacancy, cracked a job of 70 lakhs. He Hmm. was the highest paid chartered accountant without any other degree, Oh, only he was CA. AIR also. AIR also, but only CA. AIR को भी 70 lakhs का पैकेज नहीं मिलता unless and until you are a dual triple degree holder और plus work ex. उसका एक साल के वर्क एक्स पे 70 lakhs का जॉब था, उसको जॉब है कंडीशन है उसके सिर्फ पास. ये मिला था कि उसको 1 साल तक कंटिन्यू 16 आवर्स वर्क करना है, 15-16 आवर्स. हाँ, 16 hours, 16 hours, 7 days. Exactly, 7 days, 16 hours each day. He has to work for 1 year. He had done and got a package directly for 70 lakhs. So I think वो 20 से सीधा 70 पे जंप किया. Oh, nice. So ये Okay. फील्ड ऐसा है फाइनेंस का. Oh, so you were talking about that one of the big firms, big four offer this M&A taxation field. So, like, may I know which particular big four is this who offers this positions? I think it's KPMG. 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 Okay, KPMG. Got it. Yeah. So, apart from like this articleship wala thing, I just want to shift my question to industrial training. So, like, let's say that finance profile wala cheese that doesn't happen in the first year of articleship. So, like, I was thinking to like, okay, let's settle down for a 1 year audit work at any audit firm. And I guess in the session right now, Lalit sir mentioned that a person was doing his articleship with a mutual fund distributor in the first year itself. So, like, is it possible to do that? Yeah, you can do assurance based internship. You can do internship in assurance segment in a big four, and specialize, a specialized segment of financial services. In financial services, there are basically three segments: mutual funds, banks, and insurance. You get experience Okay. of all these three kind of companies depending upon your team. So once you get that exposure, that automatically adds to your resume. And then when it comes to industrial training point of view, there's a JP Morgan, Morgan Stanley. There are 2 3 investment banking companies who hire for industrial training. So every year around 400 to 500 people apply for industrial training at JP Morgan, and those include non-CA background trainees also, like MBA in finance or taxation or BCom graduates from SRCC or Mumbai University. There are almost at our time there were 400 applicants, and out of 400 they hired only 4 interns. One of them was from CA background, and that was from our hostel outfit. So only Okay. one was chartered accountant. Got that. Got it. So, like, do these companies, So JP opportunities Morgan? will come. These opportunities will grow. But what Mm-hmm. our view is, you should not leave any opportunity which comes at your way, like just like CFA. You should do what is entirely in your hand, Of right? course. Leave up to Yeah. some of luck and thing. Yeah. So अब So, आपके like, पास है, आप पीयूष first तो 2 years में you can clear CFL. सॉरी, हाँ विनोद. सबसे इम्पोर्टेंट तो you have done your regular college from SRCC. It's the best Hmm. part. Another thing, if you want to go for these opportunities,
till the time you are planning to complete your bachelor's degree, you have time in between, so you can focus more on other courses like investment banking courses. If you are not going for that, then there is financial modeling and 2 3 more courses are there. You can find it on Yeah, right Udemy or now some other I'm place. engaged in these NISM courses Okay. conducted by SEBI, and in that also I'm just focusing on 2 to 3 courses, be it equity derivative, the other is mutual fund distributor, and the third one is research analyst. So, as After Pawan that, mentioned earlier, when he was telling about UPSC, that the important thing is the chances of getting your selection and on a priority. So that is the only thing which you are having the best part, that SRCC, and along with that is regular college. And another thing is the other courses which you are pursuing. That is in with a, you can say, a good line, or you can say it will keep you on the priority while getting selection if you get an opportunity. okay, and also one thing, like I have 4 to 5 months left till my graduation. After then only I will be able to join the art for the articleship thing. So like I just want a suggestion from you guys, that should I start approaching people, connecting people from these big fours on LinkedIn regarding the articleship thing, and There try is it out. Yeah, dedicated you can courses definitely. for articleship given by ICI, number one. Number two, I know your LinkedIn profile is good and you can make it more better. So the for सबसे strong ही LinkedIn ही है आज, where the people can see your profile and judge you Mm-hmm. accordingly. So LinkedIn अच्छा होना चाहिए, and yes, you can approach via LinkedIn. You can make many more connections over there. Just why I was asking, ki, like, do these big fours actually see these LinkedIn requests and actually considers these requests or not, or like You those things? can directly approach to HRs and connect with the some senior members, directors, or Mm-hmm. senior managers. They will answer. They will answer your questions definitely, And or they LinkedIn will is directly message profile you. for professionalism. So I think Pawan and Lalit and me all are continuously watching their LinkedIn at least once in a day or once in 2 or 3 days. So that is very sure that if you want to go for LinkedIn, it is the best source to connect yourself. Now, Okay, okay. Gautam, you can Gautam, ask your Gautam wants question. to say something. Yes, एक्चुअली Gautam. हाँ या एक्चुअली आई वांट टू आस्क दैट कि अभी हम लोगों का बोथ ग्रुप हो गया क्लियर, सेम डाउट जैसे पीयूष का था. सो अभी कॉलेज वगैरह में आफ्टर 4 और 4 मंथ्स के बाद हम लोग आर्टिकलशिप ज्वाइन कर पाएंगे. सो जो टॉप 10 फर्म्स है दे सेड कि इमीडिएटली ज्वाइनिंग बेसिस में, सो इसमें क्या प्रोसेस रहना चाहिए, मतलब अभी हमें करना चाहिए या 2 महीने पहले ही सर्च करना चाहिए कंपनीज के बारे में, क्योंकि इनका वो सिस्टम होता है ना कि तुम्हारा कब, अगर अभी हमने प्रोसेस करा देन दे वांट कि ज्वाइनिंग विद इन अ मंथ कर लो या वैसा सिस्टम कर लो. हाँ, वही वही इसके लिए वही. क्या करना चाहिए अभी, मतलब कब से आई रिसर्च वो थिंक करना चाहिए? बेटर इमीडिएट यही रहेगा कि ज्वाइनिंग. जो गौतम, वो आपके आगे के 4 मंथ्स का कोर्स ऑफ एक्शंस क्या रहेगा मतलब? अभी तो ऑन द तो दैट बेसिस यू कैन डिसाइड, नो मींस. नहीं, अभी ऐसे ही हमें एनओसी रेगुलर कॉलेज से ना आफ्टर 30th अप्रैल ही मिलेगी, मतलब सो दैट हम ज्वाइन कर पाए आर्टिकलशिप. बेसिकली दे आर सेइंग कि उनका एक्चुअली ये दिल्ली टेक्निकल इशू यूनिवर्सिटी आ रहा वाले होते है. हैं ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को आर्टिकलशिप अलाउ नहीं करते हैं until unless they complete their अच्छा, graduation. So they both are from Delhi University. ओके. तो इन लोग का जो प्रॉब्लम है अभी, उसका सोल्यूशन यही है कि डायरेक्ट एचआर उनको अप्रोच करो, बट वाया लिंक्डइन और वाया अदर सोर्सेज. डायरेक्ट मत जाना, बिकॉज अगर वो एप्लीकेशन लग गया और अगर फुलफिल नहीं हुआ तो 6 महीने के लिए ब्लॉक हो जाओगे Big Four से. हाँ, तो नहीं तो एचआर के भी मेरा ऐसा सजेशन है कि आप है ना कोई स्ट्रांग रेफरेंस के थ्रू देखिए ना. अगर आपकी कोई लिस्ट में या आपके कोई क्लोज कनेक्शन के लिस्ट में देयर इज डायरेक्टर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल पर्सन इन एनी और बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन या बिग 10 में जो भी आप बात कर रहे हो ना, आप उनसे बात करके रखिए. आप आपका प्रोफाइल बताइए. बहुत इंप्रेसिव प्रोफाइल होता है यार. एसआरसीसी ग्रेजुएशन एंड देन इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियरिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट, दे विल डेफिनेटली टेक यू. ऐसा कुछ नहीं है. वो लोग बस एचआर को प्रेशर किया हुआ रहता है कि अभी आर्टिकल्स चाहिए. जो मैंने रीजन बताया, अप्रैल, मई एंड जून, दिस 3 मंथ्स आर द मोस्ट हाईएस्ट पीक पीरियड इन बिग फोर. तो इसके लिए वो कहते हैं. बट आपको अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज मैंने मेरे साथ कलीग देखा है एक एसआरसीसी से ग्रेजुएट एंड ही डिड आर्टिकलशिप फ्रॉम बिग फोर. कुछ लगता है तो आई आस्क हिम, ही वाज माय रूममेट आल्सो फॉर सम टाइम. तो ऐसा तो होता नहीं है बिग फोर, मतलब एसआरसीसी के ग्रेजुएट्स आई हैव सीन इन माय आर्टिकलशिप टेन्योर. ओके, ओके. और डेफिनेटली आपका प्रोफाइल देखेंगे यार, आप SRCC से और ये सीनियर मैनेजर डायरेक्टर्स, अगर आप
उनको अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। रेगुलर कॉलेज का तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, आपने कॉलेज रेगुलर किया है, ये सबसे अच्छी बात है। वो चीज़ शुरू में पवन ने बोली कि और देवेश ने बोली कि अपना कॉलेज प्लीज रेगुलर ही रखना जितना हो और सके। उल्टा उनके लिए तो प्लस पॉइंट होता है, बिकॉज जो दूसरे के बच्चे होते हैं वो लोग ड्यूरिंग आर्टिकलशिप बीकॉम के लिए हॉलीडेज, ये एग्जाम एटलीस्ट एग्जाम लीव्स तो लेनी ही पड़ती है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टूडेंट्स को, तो वो भी एक उनके लिए प्रॉब्लम हर्डल चले जाता है ना। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो वो प्लस पॉइंट ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक कुछ जगह से कुछ मिसकम्युनिकेशन या हुआ होगा, आप कोई एंड एक और सीनियर लेवल तरीका, पर्सन से आप बात किया, एक्सकेलेट करो जैसे इसको। कि ये डिलॉयट वगैरह हमारी कैंपस प्लेसमेंट्स में भी आती है। सो तो वो आएगी आफ्टर 2 मंथ्स, और अभी भी ऐसे कि लिंक्डइन वगैरह में पोस्ट वगैरह आती है कि वैकेंसीज। सो हमको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू करना चाहिए, अगर अगर हमने अभी करा। सो अगर उनके पास हो तो हमारा वैसे मेल आईडी वगैरह ब्लॉक करने का सिस्टम रहता है उनके पास, कि अगर हाँ दोबारा। नहीं, कैंपस कैंपस के थ्रू ही जाइए आप, अभी मत कुछ ये करें। अगर गलती से रेज्यूमे चले गया एंड देन वो कुछ हुआ नहीं ना, तो 6 मंथ जैसे अभिनव ने बोला, वो आप कभी फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में जा नहीं पाओगे 6 महीने तक। तो यू गो थ्रू कैंपस ना, जब प्रॉपर रूट अवेलेबल है तो व्हाई व्हाई टू गो फॉर अ तो वो डिफिकल्ट कैंपस रूट। अरेंज ही आपके कॉलेज के हिसाब से ही कर रहे हैं ना, वो तो है ही है। आप अपना सिर्फ अभी ये टाइम है ना, आप दूसरे कोर्सेज करो, दूसरे जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज है वो करो। दूसरा अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा बनाओ, सीवी अच्छा बनाओ, प्रिपेयर करो अपने आप को, और आइडेंटिफाई करो अपनी अपॉर्चुनिटीज जो एरिया आपको स्पेसिफिकली चाहिए। वो अगर मिल रहा है पहले ही, तो आप पहले बात करके रख लो कि मुझे 2 महीने के बाद ज्वाइन करना है सेम एरिया, इफ इट इज अवेलेबल। नहीं तो फिर कैंपस के थ्रू आप जा ही सकते हो। आप अपने एरिया की तरफ स्ट्रिक्ट रहो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ऑर्गेनाइजेशन मैटर नहीं करती है, आपको जो काम करना है वो मैटर करता है। वो आपको मिल रहा है तो उस पर स्टिक रहो, उसके लिए आप नेगोशिएट करो, उसके लिए आप बात करो। यस खुशबू? Just like you mentioned earlier that a strong resume would be a plus point if you want to apply for Big Four. Sir, can you please review my resume? Definitely, you can share on our email. In fact, Devesh is also mentioned. We'll also write our email and contact details after the session, so you can just note it down, and we'll be happy to assist you. Okay, sir. Thank you so much, sir. Rishabh? Yes, sir. So, like my keen interest is the taxation, and if I get an opportunity in the international taxation, so it will be in a pleased. So, sir, I'm very confused between the taxation and the audit field, and how to choose in between this. It's very confusing for me. So, can you please clarify this, because I have an interest in the taxation, international taxation, even also, and even in the auditing in also. ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है वो देखना चाहिए, एंड देन यू कैन गो फॉर सम स्मॉल साइज फर्म। देन इफ यू हैव इंटरेस्ट इन बोथ टैक्सेशन एंड ऑडिट, and you are keen to learn about both the things and then decide ki what thing to specialize post qualification, then you can join small size firm. Like Lalit was in a very small size firm wherein he used to do जैसे 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 डेडलाइन आती थी, अब जैसे 31 दिसंबर आया तो जीएसटी, हाँ ललित विल थ्रो सम लाइट। Yeah, like in small firm, you will get the idea of all the areas like tax, GST, audits. For a few days, I also involved in the international taxation works. तो small firms में ये सब मिलेगा, then you can decide कि हाँ मुझे किस तरफ जाना चाहिए. And like if you want to go from the first day into the big fours or this kind of, so you can also go in big fours like taxation में मुझे international taxation मिल रहा है तो अच्छा है. Then you can also switch over there. मतलब in big four के अंदर भी आप 6 महीने के अंदर switch कर सकते हो वैसे. In the audit और in like आपको corporate tax move करना है, international tax पसंद नहीं आया तो. और कभी ऐसा भी होता है ना कि ज़्यादा इंटरेस्ट जिसमें है, कीप इट फॉर ईयर 2 एंड ईयर 3। फर्स्ट ईयर जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन यू कैन गो विद द थिंग विच यू डोंट लाइक मोस्ट। अगर सपोज आपको टैक्सेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है लेकिन आपको फिर भी ऑडिट ट्राई करना है, तो इनिशियल ईयर में ऑडिट ट्राई कर लो, देन टेक अ ट्रांसफर टू टैक्सेशन डिपार्टमेंट एंड यू कैन कंटिन्यू। बिग फोर ट्रांसफर दे देती है, मतलब अगर हमने एक साल बिग फोर में करा, देन देयर आफ्टर हमें लगे कि अब थोड़ा स्टडीज वगैरह करना है तो एक मीडिया का ज्वाइन कर लेते हैं। सो वो सेकंड ईयर में ट्रांसफर सेकेंड ईयर इसलिए। में ट्रांसफर आप ले नहीं सकते। अच्छा, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में ही लेना हो आप फर्स्ट ईयर में जितना ट्रांसफर चाहिए ले सकते हैं, सेकेंड ईयर में यू कैन नॉट टेक एनी ट्रांसफर। देयर आर फ्यू ग्राउंड्स मतलब ऑन दैट, मेडिकल ग्राउंड्स, पेरेंट्स आर मूविंग टू अनदर सिटी, थर्ड इज मॉरल टर्पिट्यूड, ये ऐसे 4-5 चीज़ें होती है, तो ये आप सेकेंड ईयर में ट्रांसफर ले सकते हो। आई थिंक विच इज़ नॉट फिजिबल फॉर यू। सेकेंड ईयर में ट्रांसफर नहीं ले सकते, यू कैन गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग।
in first year you can take the transfers. और इनफैक्ट इसका एक सोल्यूशन ये भी रहता है, हम लोग के टाइम पे देयर वाज secondment. So in secondment you are registered with someone and working for someone else. So GT is the firm who gives you secondment opportunity. There you can register yourself with one firm and you can work for GT on a secondment basis. So one request that can you throw some light कि अगर फर्स्ट ईयर में मैं अगर ऑडिट में रह जाऊँ एंड जो मेरा इंटरेस्ट है टैक्सेशन में वो मैं सेकंड एंड थर्ड ईयर में रखूँ तो उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेगा, क्या चीज हो सकती है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो? टू बी मैं ऑनेस्ट, बोलूंगा इस पे, पहले साल में कुछ सीखने ही नहीं मिलेगा, पहले साल में तो चीजें समझने में साल निकल जाएगा। इंटरेस्ट और वो आने में तुमको है ना सेकेंड ईयर तक का, मतलब जब आप सेकेंड टाइम वो चीज करोगे कुछ ज्यादा टाइम मिलेगा, तब जाके वो ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट ईयर में बहुत एकदम ब्रॉड ओवरलुक मिलेगा, डिटेल्ड जो एक मतलब इंसाइट होता है ना वो आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा। और टू बी ऑनेस्ट पवन, सेकंड ईयर में ऑडिट, मतलब सेकंड ईयर में आप ऑडिट में मूव कर सकते हो बट नॉट इन टैक्सेशन। कोई भी मतलब टैक्सेशन नहीं देगा आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में, मतलब आप मूव करोगे तो, राइट पवन? हाँ नहीं वैसा तो है, बट ऐसा मतलब फिक्स बोल नहीं सकते, डिपेंड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बार आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा वो चीज। और मैं अगर बिग फोर्स वगैरह की बात करूँ तो टैक्स के अंदर बहुत लिमिटेड इंटर्न्स होते हैं बिग फोर में। अगर ऑडिट में उन्होंने 60 इंटर्न्स हायर किया है तो एट द अदर एंड टैक्सेशन में दे वुड हायर ओनली 5 to 10 आर्टिकल्स, 5 to 10, यस। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो यही होता था और अभी भी ऐसा ही होता है। तो टैक्सेशन में दिस वेरी लिमिटेड स्कोप फॉर इंटर्नशिप, और टैक्सेशन में इतना डिटेल्ड क्या मतलब एक्सपोजर नहीं मिलता है आर्टिकलशिप में जितना ऑडिट में मिलता है ना। ऑडिट में इट्स एन वेरी वाइड अरेना। टैक्सेशन का जो होता है ना, टैक्सेशन में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं वहाँ पे, लिटिगेशन अलग है, पर्सनल टैक्सेशन अलग है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन अलग है, फिर एक पर्टिकुलर क्लाइंट का ही टैक्सेशन दिया जाएगा। ऑडिट में वैसा नहीं होता है, पर्टिकुलर क्लाइंट के हर एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप लिस्टेड क्लाइंट कर सकते हो, आप प्राइवेट लिमिटेड क्लाइंट कर सकते हो, तो इसमें काफी सीखने मिलता है। और कोई क्वेश्चन है किसी को? Anyone have any मतलब question, or we can just wind up the session. So we will just mention our WhatsApp numbers on the chat box, so you can just take a picture of that and later on save to your devices. अब वो कोई भी इशू रहा लाइक रेज्यूमे में कुछ अगर आपको करेक्शन करवाना है या चेक करवाना है, या कुछ भी अगर कोर्सेज रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, या बिग फोर में हायरिंग प्रोसेस या कहाँ पे जाना है, आपको कुछ लिंक वगैरह लगाना है, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट टू ईदर ऑफ अस, so we'll surely help you out whatever is possible in our hands. ठीक है, so बिना concluding remarks दे दीजिए सेशन के लिए। It was a very long and interactive and very interesting session. Exciting bunch of people, मतलब interested है दो घंटे तक, बहुत बड़ी बात है ये। So, really, you can say insightful session by Devesh Kabra at the first, and Pawan Mundra at the second, Lalit Malu third, and definitely I'm the fourth. And personal thanks to each and everyone for joining the session and asking your doubts. And we had just keep the session for you guys, and hope there is no more doubts, or if you have, then as Pawan mentioned, you can contact us directly. And thank you so much, Pawan and Lalit, who has given us the time, their valuable time, as they are also having working tomorrow and day after tomorrow due to some deadlines. And also, the Pawan is taking seminars and webinars in his hometown with ICI, and Lalit has got opportunities to give his ideas on various topics. So thank you everyone to connect with us, and hope to see you again in future with more insightful sessions, or in fact I can say your values over it after you are selected for your articleship. Definitely will connect once. Yes, Rishabh.
the last question which you can ask as of now. सो अभी जस्ट पवन सर ने कहा था कि टैक्सेशन में इतना एक्सपोजर नहीं मिलता आर्टिकल को। सर थोड़ा सा आप प्लीज इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस चीज में एक्सपोजर नहीं मिलता, मतलब टैक्सेशन में एक आर्टिकल को। अभी इतना मतलब ऐसा प्रैक्टिकली तो मैंने देखा नहीं है, बट जो मेरे मतलब एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स से मैंने ये क्या है, बिकॉज मेरे कुछ मतलब एक दो फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने टैक्सेशन में आर्टिकलशिप किया है। बिकॉज कैसे है ना, टैक्सेशन के अंदर जैसे मैंने बोला कि वहां पे ना बहुत सेगमेंट्स है बिग फोर में। मतलब अब जैसे ऑडिट में सेगमेंट्स है, इट इज क्लाइंट वाइज, बट टैक्सेशन में ना एरिया वाइज सेगमेंट है कि टैक्सेशन में लिटिगेशन इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, पर्सनल टैक्सेशन इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट टैक्सेशन इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। और डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है ना, बिग फोर में टीम वाइज ऐसे क्लाइंट दिया हुआ है। ऑडिट में क्या होता है, स्विच होता है, मतलब एक टीम को एक साल एक ऑडिट दिया तो उसी टीम को नेक्स्ट ईयर कुछ और क्लाइंट पे देंगे। बट टैक्सेशन में ऐसा नहीं होता, एक टीम के पास जो क्लाइंट है वो वही क्लाइंट का देखते हैं और उसी क्लाइंट का टैक्स देखेंगे। तो टैक्सेशन में कैसा बिजनेस इनसाइट नहीं मिलता है, ऑडिट में देयर इज न्यू थिंग, कुछ ना कुछ बिजनेस में न्यू एडिशन वगैरह करता है। तो आई थिंक देयर इज अ लिमिटेड लर्निंग, दैट्स द रीजन वो लोग काफी लिमिटेड इंटर्न्स लेते हैं वहाँ पे। अगर वहाँ पे लर्निंग का स्कोप बहुत होता, ब्रॉड होता ना, तो वो भी आर्टिकल्स वहाँ पे अच्छे हायर करते थे ना, क्वालिफाइड चार्टर्ड्स वहाँ पे रहते हो। बट एज कम्पेयर टू दैट जो रेशियो स्टैट्यूटरी ऑडिट में है ना, वो काफी लो है टैक्सेशन में। तो इस पे और भी थोड़ा तुमको वो डिटेल में चाहिए तो आई विल कनेक्ट यू विद वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज देयर इन टैक्सेशन प्रैक्टिस, so I'll give you more insight. Okay, thank you so much, sir. Yeah. So thank you everyone for your valuable time, and hope to see you soon again with more bright colors on your future. So thank you so much everyone, especially Lalit and Pawan, for the valuable time, and everyone, thank you for the connecting. Chalo. Okay, nice. Good night. Bye bye. Just signing off. You can just take the picture from the chat box. We have shared our numbers there. Thank you so much, sir. Thank you everyone. Thank you, everyone. Thank you.